ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। प्रेजेंटेशन के बाद जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना डिजिटल हैंड जो है वो रेज कर सकता है, उसके बाद हम उसको अनम्यूट करेंगे और वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जी हम सही आप स्टार्ट कर सकते हैं। First of all, thank you very much for inviting me. And before, I'm grateful to the organization plus Tayyib Saab. You have been very kind and by inviting me. And I would love to share a lot of information with you. सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ थोड़ा सा और करवा दूं। मैं obviously हम पाकिस्तान से सफ़र का आगाज़ हुआ एंड मैं यूएटी का पढ़ा हुआ एक इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग से मैंने क्या सीखा, आई एम श्योर कि आपने अपनी एजुकेशन में बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी बेसिक एजुकेशन में इंजीनियरिंग में मैंने 3 चीज़ें सीखी जो आई स्टिल अप्लाई टू व्हाट आई डू टुडे। पहली बात जो मैंने सीखी इंजीनियरिंग में वो ये थी कि लॉजिक, हाउ टू लुक एट एवरीथिंग फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो लॉजिक मैं अभी भी यूज़ करता हूँ अपने इस प्रोफेशन में, क्लोथिंग, ड्रेसिंग, इमेज। अगर मैं कहूँगा कि ये शर्ट आपके ऊपर अच्छी लगती है तो आई विल गिव यू अ रीज़न फॉर इट। ये कलर अच्छा लगता है तो आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, so I'll give you rationale for that. So I learned rationale from engineering. Secondly, I learned from engineering also how to connect the dots. Life is all about connecting the dots. In profession and in business and personal life, there are a lot of issues that we have to sort them out. और होता ये है कि कुछ चीज़ें हम देखते हैं, कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, and then whatever we're working on, all of a sudden a connection बनता है, कहते हैं हाँ, so that's what connecting the dot means. Wardrobe is a very complex thing. It's a science. It's not a rocket science, but it is a science. तो हमने कैसे कनेक्ट करना है डॉट्स के साथ, हमने ओकेजन्स क्या हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमारी कलरेशन क्या है, हम करते क्या हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, who do we interact with. So all those things are very, very important. So this is all about connecting the dots and then finding out कि हमारा ideal wardrobe क्या होगा. This is the second thing I learned from engineering. Third thing which I learned from engineering is how to solve a complex problem. जो इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि आप बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लें, उसके बाद आप उसको स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करें, and then you work on small problems and you get big problems solved. Wardrobe is not an easy, I would say, a problem. It's quite elaborate, quite comprehensive, quite, you have to know for different occasions. And again, that I just mentioned, there's so many variables. So I applied that, these 3 things which I learned from engineering, I'm still applying that to what I'm doing today. उसके बाद मेरा सफ़र का आगाज़ था वो, it took me to New York. न्यूयॉर्क क्यों गया, उसकी थोड़ी स्टोरी है। वो ये कि we all know this, that we become what our parents want us to become. Very few they actually pursue whatever their dreams are. Rightfully so. I mean, parents हमें guide करते हैं, they know a lot about us and they know a lot about the family and what circumstances are. So they guide us to become doctor, engineer, accountant, whatever. So my dad was an engineer, so he asked me, he says, what do you want to be in your life? And I said, I don't know. So he said, if you don't know, then you should become an engineer. So engineering करके जब मैंने engineering कर ली, then I knew that I did not have my passion in there. I just didn't have it. I mean, I did well, relatively. So I went to New York, soul searching करते कि where is my passion, where I want to spend my rest of my life, where I want to contribute, where I can add value. So this is what I was thinking about. And so when I went to New York, I said, let me get more education. So I decided to do MBA. अच्छा, MBA आपके साथ क्यों relevant है? Why it's relevant to what I'm doing? देखें, you're all in business, right? अगर मुझे ये नहीं पता कि business कैसे operate करता है, if I don't know what are the titles, what are the different positions and what are the different roles and how people should look. एक C-level बंदा जो है, CFO है, CEO है, उसका role क्या है and how he should look. Middle management का बंदा है, how should he look? So how could I, help them? So I learned the tricks over there.
in terms of business के business कैसे operate करता है. So I bring that experience here as well. और तीसरी चीज, I kept on still searching, and then finally I landed at FIT, Fashion Institute of Technology, जो कि 5th largest university है दुनिया में, and where all the big designers have gone there and got their education. तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे realize हुआ कि this is my calling, this is what I want to do in my life. लेकिन real challenge शुरू हुआ जब after I was educated there कि अब करना क्या है. एक फैशन डिजाइनर की लाइफ क्या होती है, या वो कोई ब्रांड बना लेता है, या कोई अपनी दुकान खोल लेता है, अपना स्टोर खोल लेता है, या अपने start working for a production house, start working for a fashion house. So I was out of the box thinker. So मैंने कहा कि I don't want to do any of these things. I mean, it didn't appeal me. So फिर I was at the same crossroad, and where I had to make a decision. And then I started thinking about this, my own personal life, that in my professional life there was nobody to guide me. कि कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कलर पहनूं, कौन सा कट पहनूं, what looks good on me, in which clothes that I look more appropriate. तो मैंने सोचा कि अगर इस एरिया में if I develop my expertise, how the professional people should look, man, woman, doesn't matter. I think that I can see myself, being passionate about that. So I developed 5 pieces of dressing. A formula ऐसा, once I will share with you, and I can tell you, my big claim to fame is this, that if you understand this formula, you relate to it, you comprehend it, you internalize it, and if you can implement it, I tell you something, you will never make any dressing mistake. It's a big claim, but inshallah, I will prove it to you. So, then I came out of the gates and with this formula, 5 pieces of dressing. And first, I thought about this. I know that you guys are running businesses, or you are part of some businesses, or maybe you are setting up your own practices. तो जब आदमी नया आता है तो सोचता है कि यार कहाँ से शुरू करूँ. So I thought about the same thing कि कहाँ से शुरू करना चाहिए. So I decided that instead of starting at the bottom, I should start at the top. तो सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई वो गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क से. I mean, I'm just coming out of the gates, and that's my first appointment. तो मैं आपको थोड़ा सा relate करना चाहता हूँ क्या हुआ उस appointment में, and then you will see how relevant it is to what I'm going to be sharing with you today. So I got into the room, and he said to me, "Oh, you're the dressing guy." I said, "Yes, sir." So he said, "Well, I've been wearing suits all my life. So what can you tell me?" So he kind of put the pressure on me and put me on the spot. So I said to him, "Sir," I said, "I have developed 5 pieces of dressing." So he said to me, 5 pieces of dressing, what is it? And I said, 5 pieces of dressing. The first piece, pigmentation. Pigmentation means color. Color means your eye color, hair color, skin tone. So he said, what's the relevance to my clothing? I said, a whole lot. I said, you have a particular skin tone, your eye color, hair color, you're very unique, and certain colors will look good on you and certain colors will not look good on you. So I had done some research, जाने से पहले मैंने कोई research की थी कि उसको कौन से colors ज़्यादा पसंद हैं. So he was always wearing blues. So I had about 15 shades of blues. आपको पता है blue में कितने shades मिल जाते हैं. So immediately I saw the opening and I started like getting engaged, got him engaged, and I started draping in different fabrics जहाँ skin tone के पास रख के. It's like अगर आप glasses पहनते हैं तो कभी glasses लेने जाएं तो जो वो शॉपकीपर होता है वो आपको या डॉक्टर वो डिफरेंट लेंसेज लगा के दिखाता है कि कौन से लेंस में अच्छा बेहतर लग रहा है. तो I kept on showing him that. So he said, fascinating, वही है तरह fascinating. And then he said to me, he said, I've been wearing clothes, I have designers come to my home, I can go to Italy, I can go to Rome, I can go to Paris, but nobody's ever told me this, that my skin tone, my eye color, my hair color has some relevance to what I should wear. And I said, sir, I can prove it to you. So anyway, he kept on looking and looking, and finally we zeroed in on one particular shade. And, I felt that that was the best color for him. So I asked him, I said, what do you think about this? And he said, he loves it. So he liked it, what I showed to him in the end. And he said to me, I asked him, I said, tell me, like, why do you like this color? And you know what he said? He said, because my skin glows in it. I look more vibrant in this. And this is science. This is science about colors. Inshallah,
dig deeper into that a little bit later. So pigmentation जो है इंतहाई important है. So as soon as I was giving him this demo and I want to tell him what this second P is, what's the second pillar, he said to me, you know something, you have convinced me. I'm very busy. I don't have time to listen to the other 4 Ps, but you have given me a very compelling argument. So why don't you make me an outfit the way you see it? So that was, gave me a very, very big breakthrough there. And so I was able to make a suit for him, complete outfit with a shirt and tie and everything. So he got that and he loved it and called me up and he said, you know something, it's fascinating. It's very impressive what you've done. So this is how I got a break, and I got a real big break. And my next step was, president of Bar Association of New York. हाँ, पाकिस्तान का बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वही नहीं मान तो आप समझें कि न्यूयॉर्क का जो होगा वो how much ego and all that and the power. Similar thing happened to him also. And I went up to him. He was a very gracious man, and he was like it was a huge office, and he came out to greet me very, very warmly. And then he said to me, he said, I'm very happy to see you, Hamid, and but I'm sorry, I have only 1 minute. What can you tell me in 1 minute? Substantial. अच्छा, अब आप 1 मिनट में क्या बता सकते हैं अपने बारे में? ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम बता देंगे, अपना टाइटल बता देंगे, that's all you can say. And I knew he meant it, क्योंकि न्यूयॉर्कर था. I knew कि अगर मैंने हाई बाय में, more nicety में टाइम वेस्ट कर दिया, तो I think I'm going to lose the opportunity. तो मैंने कहा, sir, I can tell you something very substantial in 30 seconds, not even 1 minute. Brian Press वो कहता 30 seconds, you can tell me, yes, sir. अच्छा, अब जो मुझे वॉक करके मेरी तरफ आ रहा था, I had gauged him, I had judged his dressing and all that, what he was wearing and everything, because just a quick glance, I'm trained to do this, so I knew what color he was wearing, I knew, the clothes he was wearing. So when he was walking towards me, I thought he was wearing Armani suit. उन दिनों में वो $5,000 वाला सूट उसने पहना हुआ था. इटालियन उसकी शर्ट थी, हर्मेस की टाइज बहुत एक्सपेंसिव टाइज है वो उसने पहनी हुई थी, बॉलिस की शूट पहने हुए थे, बेल्ट भी बड़ी क्लासिक बेल्ट, एक्सपेंसिव बेल्ट थी. So I thought he was wearing maybe about $7,500 on him and on that day. So I knew that he's a very well dressed man. So anyways, in 1 minute and a half, so he said, tell me 30 seconds में मुझे क्या बता सकते हो? मैंने कहा, sir, in 30 seconds I can tell you this white shirt you are wearing is not good for you. I said, जो ही मैंने ये कहा, he had a smile on his face, that mocking smile. And then he said to me, he says, what's your name again? I said, my name is Hamid Saeed. And he said, where are you from? I said, I'm from the United States. I'm from New York. He said, no, where were you born? I said, I'm, sarcastically, he said. And I said, yes, I was born in Pakistan. And he said, then, do you know who I am? Do you know what I do? Are you drunk? Are you smoking? How dare you tell me this white shirt is not good for you? Good for me. So I said, okay, sir, I have a reason I can tell you that if you want to listen to it. So he said, okay, tell me, what's wrong with my white shirt? So I said to him, looking at his eye color, hair color, skin tone, because it was very, very delicate coloring he had. And it didn't suit him at all. So I said to him, I said, sir, with all due respect to you, I said, this shirt is overpowering you. He said, overpowering me? What kind of language is this? I buy suits, I buy shirts, nobody talks in these terms. So he said, plain English, tell me in plain English, what's wrong with my white shirt? So what I said to him was, I said, sir, when you were walking towards me, I didn't see you, I saw the white shirt. So he got really intrigued. And he said, you are a very interesting guy, why don't you sit down and we'll talk more. So that 1 minute went into 45 minutes because I got the opportunity. Anyway, the bottom line of that story is this, that his right color was ecru color, not the white. Off white होता है ना, एक ecru color होता है, वो Boskia color जैसा समझिए, Boskia color उससे भी light version. So I felt that was the right color, and then I
again, I showed the swatches and showed on his face and everything, how it looks and all that. And then he said to me, he says, what's the next step? I said, the next step is I'll make you one shirt, and we'll see where we go from there. I made the shirt. He went home. I sent him the shirt. Obviously, shipped it to him. Then he called me one day. Said, something, you are so damn right. And he, on that day, was wearing that combination and that shirt. Obviously, he knew how to dress. I mean, I didn't teach him how to dress. I mean, the guy was very elegantly dressed when I met him. So the bottom line of this is that he got so impressed that he gave me assignments that I should talk at Bar Association, and he opened a lot of doors for me. So my life story went like this for 20 some years, 25 years. I must have dressed more than 50,000 men and women from all segments of businesses. I've done also, you're talking about professional accountants and finance professionals. I have done presentations for, I'm telling you all this, not for bragging purposes, but just to tell you, like, I have lived it. I know what it takes, when you're working with this kind of organizations and, with this kind of profession. So I've done trainings for KPMG, Price Waterhouse, Ernst & Young, all the big four. Then I have financial sector. I've done JP Morgan, Morgan Stanley. I have also done Goldman Sachs. I've done American Express. And what I learned from there is, that I learned the trade. I learned what audit means and what, a retail banker means and what investment banker means. So I have a lot of exposure, inshallah, I'll share with you. And it's going to be a very interesting session. If you have any questions, just keep on, jotting it down. And in the end, I'll take all the questions and try to answer those. So now the last part is that you might think, okay, this guy's, if he has such big credentials, what is he doing in Pakistan? So uski thodi motivation मैं आपको बता दूं. One day I was sitting in my living room and all of a sudden I start thinking, okay, I've done a lot for myself, my family, my business. So एक ख्याल आया कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, my country. I'm talking about a country here, जहाँ मैं पैदा हुआ, जो मेरी मिट्टी है, जहाँ से मैंने सब कुछ लिया, and then I went to the United States. So मैंने सोचा I have not given anything back to my country. So that's where this whole thing started, and I started thinking about this. Before that, I had never thought that I would ever come to Pakistan permanently or spending more time here. So मैंने सोचा कि अच्छा मैं भी पाकिस्तान में जाता हूँ और try to chip in, try to pay back, and it's time to serve the country, and that's the reason why I came here. Affluent लोगों को dress करने नहीं आया मेरे यहाँ. I mean, I've dressed enough affluent people in America. But I don't mind, if they come to me, by all means, it's fine. I don't have a chip on my shoulder, but my motivation is to work with people that very, very bright people, very intelligent people, very talented people, the ones who come from remote areas. They have all the things going for them in terms of academics and all that and smartness, but they lack in grooming. And I tell you something, because I'm an international guy, I have not seen a single person that who is, goes all the way at the top if he also doesn't look the part. This is the way that top management sees it. Actually, I want to make a point here. Top management is always watching you, my friends. I don't care what position you are in. Top management is scouting for talent. So what are they looking at? You have to have education. Without education, you won't be there. You have to have skill set. You have to have experience. You have to know what you're doing. This is like prerequisite of your job. But what they're looking for are the people that they want to move up and they want to promote and they want to take them to the middle management, the top management position. They're looking for who has that material, who can cut into this and who looks the part. To them, your appearance and the way you present yourself is the most important thing. But I tell you something, top management will never come to you, will tell you that you don't look good. Never, never. Not in a million chances that they will tell you. You see, two reasons. One reason is if they tell you, let's say, for example, you are working in a company for 10 years and the top management guy comes and says, you look very lousy, you look very stupid.
If he says that, you will never forgive him. And then you will get bitter. And you know that I will never get promoted in this company. So they don't want to make you bitter. They don't want to lose you. They want to keep you where you are, but they're not going to promote you. I can guarantee you this. दूसरी बड़ी reason है, the reason they don't tell you is this because they don't want to have a lawsuit on their head. अगर आप किसी employee को ये कहते हैं कि यार तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनते, तुम्हारी जो है appearance ठीक नहीं है, and then 6 months later maybe you want to fire him for other reasons. I mean, he could go there and sue you in the court, whether the United States, Pakistan. I think that the judge is going to listen to him. And so that's why they're scared. So top management ne aapko kuch bhi nahi bataya. But I tell you something, and you know, I've worked with international firms, international guy, I'm you know, exposed. This is the most important thing that they look for. So I don't know what level people that I'm talking to. If you are in the middle management and you are looking for promotion, if you are just coming out of college and you're looking for a job interview and job, that you are looking for a job interview, and or you could be anywhere in between. You have to think about this, that your appearance is going to make a huge difference. Like Tayyip said it very succinctly, that people look at you. People look at you every day. Look at every day. It's not like one day you gotta look good. पाकिस्तान में जब से मैं आया हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, हमेशा आप पाकिस्तान में आए हैं तो क्या पाकिस्तान में लोग अच्छी ड्रेसिंग नहीं करते? मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि नहीं, अच्छी ड्रेसिंग करते हैं. कई लोग हैं जो अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक दिन बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, दूसरे दिन समवट अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, तीसरे दिन आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं यू द सेम गाय. कंसिस्टेंसी नहीं है, सिग्नेचर लुक नहीं है. वी विल टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, सिग्नेचर लुक. So since I'm here in Pakistan, God has been very kind to me. I'm a visiting faculty member at Pakistan Civil Services Academy. I also do programs at Punjab Judicial Academy. I do programs with LUMS. I do programs at IBA में भी start करने लगा हूँ. NUS का program करता हूँ, State Bank करता हूँ. So I'm getting my message out. Dress for success is the umbrella जिसके अंदर हम बात करेंगे. तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी ताकि आपको पता चले कि रेलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है. तो अभी हम सबसे पहले 2-3 सेगमेंट हैं इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले क्योंकि हम मुसलमान हैं, थैंक गॉड, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग मुस्लिम. इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग टू मी इज नॉट मुस्लिम, आई एम गोना गिव यू सम रेफरेंस टू कुरान. लेकिन कुरान जो है, आवर बिलीफ इज दैट नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, फॉर एंटायर मैनकाइंड. तो लिबास की जो अहमियत है वो इस्लाम में क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करती हैं, देन वी विल मूव आवर कन्वर्सेशन फॉरवर्ड. तो लिबास के बारे में 2 आयत जो हैं वो कुरान में हैं. मैं आपको उनका तर्जुमा सुना देता हूँ. पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिबास मेरी पहचानों में से एक पहचान है. अच्छा, जब हम ये सुनते हैं तो हमें ये नहीं समझ आती कि पहचान कैसे बन गया लिबास, अल्लाह की पहचान कैसे बन गया. तो जब तशरीह में जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि पहचान कैसे बन गया. अल्लाह फरमाते हैं कि जो चीज़ अल्लाह ने हमारी फितरत में डाल दी है वो उसकी पहचान है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा ज़मीन है, अल्लाह ताला ने ज़मीन डाल दिया हमारे अंदर, मीटर डाल दिया है. राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वी डोंट हैव टू गो टू अ बिग मुफ्ती मौलवी. वी कैन, इफ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, वी कैन स्टिल कंसल्ट विद देम. सो वो मीटर हमें बता देता है कि मैं राइट कर रहा हूँ, रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं हराम है, हलाल है. सो दैट गाइड्स अस. इस तरह लिबास का मीटर भी अल्लाह ताला ने हमारे फितरत में डाल दिया. अच्छा, उस लिबास में फितरत में क्या डाला है? उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है शर्म हया. शर्म हया जो है वो हमें दी गई है मैनकाइंड. इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट नॉन मुस्लिम, इट्स अबाउट द एंटायर मैनकाइंड. तो शर्म हया में गाइड करती है कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए. दूसरी चीज़ हमें दी गई अक्ल और शऊर. हमें शऊर दिया गया है, हमें अकल दी गई है, तो हम सोच सकते हैं कि यार ये मुझे पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए. तो वो आपका दूसरा बैरोमीटर है. और तीसरा जो अल्लाह ताला ने डाला है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं बताया कि मैंने शलवार पहननी है, मैंने धोती पहननी है, मैंने पैंट पहननी है, मैंने शर्ट पहननी है, मैंने जीन्स पहननी है, या मैंने कोट पहनना है. अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया है. वी हैव रिसोर्सेज. कॉटन पैदा की अल्लाह ने, वूल पैदा की अल्लाह ने, जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, अल्लाह हैज हेल्प्ड अस इन मैनकाइंड.
because without him there's no invention. तो ये तीन चीजें जो हैं ये हमारी अल्लाह ताला ने फितरत में डाल दी। दूसरी आयत जरा मोर प्रोफाउंड है, आई थिंक मोर स्पेसिफिक है कि हमें ड्रेसिंग कैसे करनी चाहिए। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहला मकसद जो है वो लिबास का वो है सतर जहाँ पर, कवर योरसेल्फ। अच्छा, इसकी काफ़ी इंटरप्रिटेशन है, आई एम श्योर यू यू हैव हर्ड दैट। औरतों के लिए हदूद मुकर्रर कर दी हैं, यू नो मेन के लिए हदूद मुकर्रर कर दी हैं, and then you know obviously you know you have to follow that, and people do follow this, and we are proud Muslims and we do. By the way, I have spent a lot of time in New York. इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि we understand this, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में एक बात करूँगा, तो ये है कि वहाँ मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, men women which are half naked and minimized clothing पहने हुए, and I have talked to them, I have observed them in congregations in places like beach and all those places. Let me tell you this: if you talk to any one of them, they do not look comfortable. They do not see themselves as comfortable. क्योंकि nature के against. So चाहे वो सतर नहीं ढांपते, but inside they know it. Second purpose जो अल्लाह ताला ने फरमाया उसमें आयत में, वो है कि लिबास बनाया प्रोटेक्शन की, जिस्म की प्रोटेक्शन की। वो क्यों? जिस्म की प्रोटेक्शन इसलिए कि अल्लाह ताला ने बड़ी मोहब्बत से अशरफुल मखलूकात हमें बनाया है, तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम हर्ट हों। जिस तरह एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को हर्ट नहीं देखना चाहती, सर्दियों में, गर्मियों में, सर्दी में उसको कवर करके रखती है, गर्मियों में मेक श्योर के the child is getting all the air and everything, is not being suffocated. तो अल्लाह के बारे में तो ये है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, मे बी ये तो फिगर है, मे बी 70,000 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला doesn't want to see us getting hurt, तो इसलिए लिबास बनाया प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन किस चीज़ से? एलिमेंट से। प्रोटेक्शन जो है आउटसाइड एलिमेंट से, सर्दी में क्या पहनना है, गर्मी में क्या पहनना है, तूफान में क्या पहनना है, आप लोग अगर हाइकिंग करने जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, वहाँ क्या पहनना है, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट में फिर क्या पहनना है। I mean, obviously, I'm wearing a two-piece suit, so I mean, if I'm in the army and if I'm like in the front line, obviously I cannot wear the two-piece suit. That's not an appropriate outfit. अगर आप danger zone में हैं तो bulletproof vest, all that. तो ये सारी जो प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने सारा बंदे के अंदर सेंस क्रिएट किया है। तो दैट्स द सेकंड पर्पस। लेकिन तीसरा जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है, वो अल्लाह ताला ने जीनत के लिए लिबास बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लिबास जीनत के लिए। जीनत का मतलब क्या है? जीनत का मतलब खूबसूरती। हमें क्या है? हमें खूबसूरत लगना है। हमें क्यों खूबसूरत लगना है? हमें इसलिए खूबसूरत लगना है कि अल्लाह ताला खुद बड़े खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई बड़ी खूबसूरत है। When we go out and we see the world, I mean, you go out, you see the sky, how beautiful sky is. You see the stars are beautiful. You see, mountains, you see greenery, you see flowers. Beauty is all over. And, I've traveled in many countries and I've seen a lot of beautiful scenery and beautiful things. And the entire universe is very beautiful. तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है, मेरा बंदा जो बंदी, वो भी खूबसूरत लगे। तो ये है उसमें एक रीजन जो है जिसके ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो मेरा फ्रॉम द आउटसेट आई से दिस, हमारा मतलब हमें ये नहीं सिखाता कि हम कपड़े फाड़ लें, मैले कुचैले हो जाएं और राहब बन जाएं। हमारा मतलब सिखाता है कि हमें अपने मुकाम के मुताबिक, अपनी पोजीशन के मुताबिक हमें और सफाई जो है आपको पता है वैसे निस्फ ईमान है और पाकीज़गी जो है उसका पार्ट है। तो अल्लाह ताला ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें अच्छा लगना है, हमें खूबसूरत लगना है। अच्छा, इसमें एक कैवियट है, ये सुन लीजिए। अच्छा लगना है, खूबसूरत लगना है, लेकिन हमारे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए। अगर हमारे अंदर गुरूर आ गया, अगर हमारे अंदर तकब्बर आ गया, if I wear nice clothes and my chin goes way up and I start looking down at people and start thinking about this, that I'm way above and they're way lower than me, then I tell you something, that's a path to destruction. चाहे आप अरमानी का सूट पहन लें, चाहे कोई बहुत महंगा सूट पहन लें, बहुत महंगे कपड़े पहन लें, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है महंगे कपड़े पहन के कि आप जो है बड़े वो स्पेशल हो गए हैं एंड यू स्टार्ट लुकिंग डाउन एट पीपल एंड स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक दैट, देन आई टेल यू समथिंग, दैट्स अ पैथ टू डिस्ट्रक्शन।
और यकीन करें मैंने पास्ट डिस्कशन देखा है, you know, obviously in different countries, that's not how they feel about this. और arrogance नहीं आनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है और वो आके कहता है कि just got in, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो उसकी हालत इंतहाई पतली होती है, कपड़े गंदे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत नरम दिल थे, उन्होंने सोचा कि इसको शायद माली मावनत की जरूरत है, इसे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। तो नबी पाक उससे पूछते हैं कि तुम्हारी माली हालत कैसी है? उसने कहा मेरी माली हालत, मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ। अच्छा, कितने अमीर हो? भाई मेरे पास तो सैकड़ों बागात हैं, मेरे पास हजारों बकरियां हैं, मेरे पास तो बहुत सारी अशरियां हैं। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा देख के कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ऐसे क्यों लगते हो, तुम इतने गरीब क्यों लगते हो? तो इसमें जो नबी पाक से सिखाते हैं कि अल्लाह का शुक्र करो, जो चीजें तुम्हें दी गई हैं उनको सेलिब्रेट करो। डोंट लुक, ये भी एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जी मैं सादा सा बंदा हूँ, मैं तो सादगी है, एंड यू लुक लाइक नॉट अकॉर्डिंग टू योर, जो अल्लाह ने आपको स्टेटस दिया, मुकाम दिया है। तो ये बातें थी कुरान के हवाले से। आई थॉट के बिफोर आई गेट इनटू वर्ल्डली प्रेजेंटेशन, जो अल्लाह ने हमें प्रेजेंटेशन दी है लिबास के बारे में, वो वी गेट क्लियर। अच्छा, इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट आपसे ये देना चाह रहा हूँ आपको कि जहाँ भी मैं जाता हूँ लेक्चर देता हूँ, लोग मुझे भी लेक्चर देते हैं। इन दी एंड वो लेक्चर मुझे क्या देते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं आमिर साहब आप आए अमेरिका से, आप प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, आप टाइज की बात कर रहे हैं, आप सूट की बात कर रहे हैं, आप शलवार कमीज और वेस्ट कोट की बात कर रहे हैं, आप बड़ी प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। आपने एजुकेशन की तो बात ही नहीं की, आपने ट्रेनिंग की तो बात ही नहीं की, आपने स्किल सेट की तो बात ही नहीं की। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि तो मैं समझ रहा था कि वो प्री रिक्विजिट है, इट इज अ प्री रिक्विजिट बाय द वे, but since then I because I used to get those objections, so I want to clear this up. मैं ड्रेसिंग का बंदा हूँ, I've spent over 20 some years, 25 years, and I'm here in Pakistan for the last 3 years, and so add that probably 30 years experience. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारी चीजें जो हैं उससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी एजुकेशन, वो आपकी ट्रेनिंग, वो आपका स्किल सेट। इफ यू डोंट हैव दैट, आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट हेल्प। उसकी वजह सुन लीजिए, मेरे लिए बड़ा इजी है क्योंकि मैं ड्रेसिंग वाला बंदा, मैं को यार नहीं, एवरीथिंग इज ड्रेसिंग, एवरीथिंग इज नॉट ड्रेसिंग। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका ट्रेनिंग नहीं है, आपका स्किल सेट नहीं है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर shabby looking guy, you look sloppy, you look messy, you look disheveled. If you come to me, I dress you up and I make you look like dressed to impress. But what will happen? आप किसी मीटिंग में जाएंगे, the moment you will open your mouth, you will fall flat on your face because you don't have the substance behind it. तो ये मेरी रीजन है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंट है। ये रीजन सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसा रहे ना, कोई चीज़ के I want you to have a clear head about this and clear thinking about this. So I want to move on to my second segment, which is very, very important, and that's non-verbal communication of clothing. Non-verbal communication clothing क्या है? ड्रेस से आप अपने अपीयरेंस से, अपने पर्सोना से, अपनी पर्सनैलिटी से आप क्या कन्वे करते हैं। पाकिस्तान में इसके ऊपर तो फोकस नहीं है। यू नो दिस, अगर आप किसी ब्रांड में जाते हैं तो ब्रांड वाले ने तो आज तक कभी आपसे यही पूछा कि सजेस्ट करने से पहले कपड़े कि आप करते क्या है। He has their commercial operation, nothing wrong with that. They're there to make money, and so they are there to sell their product. So they are not involved with not your communication, what communication you should what messages you should convey through your dressing and all that. इसी तरह अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं तो टेलर बेचारा जो है वो आपसे पूछता है कि बताएं जी टेलरिंग कैसी करवानी है, स्लीव लेंथ क्या होनी चाहिए, आपसे पूछता है। तो एस्थेटिकली ही इज लाइक नॉट देयर एट ऑल, सो ही कैन नॉट हेल्प यू। अगर किसी डिजाइनर के पास चले जाते हैं तो डिजाइनर क्या कहता है, वो कहता है व्हाट्स इन, आजकल क्या चल रहा है। भाई आप तो फाइनेंशियल बंदे हैं, आप तो फैशन वाले बंदे थोड़ी हैं, तो आप सारा फैशन ला के आपके ऊपर थोप देगा। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने ये देखनी है कि हम नॉन वर्बली कैसे कम्युनिकेट करते हैं।
तो नॉन वर्बली जो हम कम्युनिकेट करते हैं, आई ऑलवेज से दिस दैट इमेजिन यू आर seeing somebody, you're meeting somebody, before you utter a single word out of your mouth, आप अपने बारे में बहुत कुछ बता चुके हो। तो वो चंद चीजें जो आप बताते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात ये याद रखिए, आप एंटर हुए हैं, इट कुड बी अ मीटिंग विद वन पर्सन, इट कुड बी अ ग्रुप मीटिंग, और इट कुड बी अ बिजनेस मीटिंग, इट कुड बी अ पर्सनल मीटिंग, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ मीटिंग। यू जस्ट वॉक्ड इन एंड यू डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू से एनीथिंग। तो सबसे पहला मैसेज जो आप देते हैं वो देते हैं कि आप किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं। दैट्स द फर्स्ट मैसेज। अच्छा, वो कैसे? सोशल सोशल सोशियो इकोनॉमिक लेवल का आप अपने लिबास से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एंटायर पैकेज से आप ये बता रहे हैं कि डू यू बिलोंग फ्रॉम ए affluent segment of the society, or do you belong from middle level, or do you belong from a low level, low middle level, or low level, or maybe from a village, just based on your appearance. By the way, it's a two-way street. It's not a one-way street. वो आपके बारे में परसेप्शन ले रहे हैं जो ऑडियंस है आपके, और आप उनके बारे में ले रहे हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो मेरा ख्याल है 95% ऑफ द पीपल दे बिलोंग फ्रॉम, अगर लो ले लें, फिर लो ले लें, फिर मिडिल पे आ जाएं, तो आई थिंक व्हेन यू कम अप टू मिडिल लेवल और accumulate all this, it's about 95% of our population. I came from a middle class family, and many of you might have, and so इसका मतलब ये हुआ कि 95% जो है हम उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें एक्चुअली जो है बात, इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड। अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो लेट मी टेल यू दिस, नोबडी कैन स्टॉप यू। किसी ने आपसे ये नहीं पूछना कि आपकी बैंक बैलेंस कितना है, किसी ने आपसे ये नहीं पूछना किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस इलाके से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। इफ यू लुक द पार्ट, आई टेल यू समथिंग, आई मीन यू कैन जस्ट ब्रीज थ्रू इट। तो ये उसमें इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, दूसरा मैसेज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो खासतौर पर आपके प्रोफेशन में, जब मैं सब्लिमिनल मैसेज की बात करूंगा उसमें भी मैं ये दोबारा इसको एम्फेसाइज करूंगा। आप कितने ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगते हैं। I mean, अगर आप देखें फाइनेंस में आप हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, वेरी कंजर्वेटिव बिजनेसेस, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, I tell you something, people are going to believe in you, people are going to listen to you, people are going to take advice. अगर आप trustworthy, credible नहीं लगते हैं, the game is over, my friend, game is over. अच्छा, अब trustworthy, credible लगना कैसे है, फिर इसकी हम बात करेंगे कि trustworthy, credible लगना कैसे है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज है कि आप कितने कामयाब लगते हैं। तो अगर कामयाब नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं, नाकाम लगते हैं, उसका ऑपोजिट तो नाकाम। So if you look unsuccessful, how far you can go with your career? Not that far, I can tell you, I can assure you that. इसके अलावा एक और सब्लिमिनल मैसेज आप दे रहे हैं, अपने बारे में कन्वे कर रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। आप एंटर हुए रूम में, आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो फिर क्या लगते हैं, लाजमी बात है फिर आप नर्वस लगेंगे। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर मैंने काफी रिसर्च की है। कॉन्फिडेंस सिर्फ दो चीजों से आता है। एक है आपकी एजुकेशन, स्किल सेट, आपका एक्सपर्टीज, व्हाटएवर दैट एरिया दैट यू आर एक्सपर्ट इन, so that when you speak with confidence. You know what you are saying, you will make sense and people will relate to you. So confidence comes from that. But the other part of the equation is how you look. क्या आप लगते कैसे हैं? If you look the part, अगर आपको श्योर नहीं है कि यार मैंने टाई सही लगाई है कि नहीं लगाई हुई, अगर आपको ये श्योर नहीं कि यार मैंने ये जो कट पहना है ये राइट है ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन सही है ये नहीं है, ये कलर सूट का मैंने ठीक पहना है गलत पहना है, मेरी पैंट की लेंथ लंबी है कि छोटी है, मेरे शूज ठीक है कि नहीं है, the moment you will get into that, it's going to affect your confidence. So you must look confident. Now education हमने बात कर ली, आपके स्किल सेट की बात कर ली, you have that, I'm glad you have that, you have that. And so now we're talking about how you should look. तो उसमें ये subliminal message जो है बड़ा important है कि आपने confidence show करना। If you don't look confident, let me tell you this, nobody's going to hire you if you're looking for a job.
unless they're blind, and I can assure you they're not blind. Nobody's going to do business with you. Why somebody should do business with you? If you look very nervous, you look very shaky, you know, people are not going to do business with you. They will not buy from you any product, concept, whatever. So you have to look the part. I'm not saying most expensive clothing that you have to wear, but you have to wear appropriate clothing, which resonates with them. इसके अलावा दो तीन चीजें और हैं. एजुकेशन है. अब कहते हैं जी मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने पीएचडी किया है, मैंने मास्टर किया है, लेकिन आप बंदे को देखते हैं, ही लुक्स वेरी स्लॉपी, लुक्स वेरी डिशेवल्ड, लुक्स वेरी मेसी. तो भाई वो एजुकेटेड कैसे लगता है? वो एजुकेटेड नहीं लगता. और जब वो एजुकेटेड लगता नहीं है, इट्स सच ए आयरनी एंड सच ए सैड थिंग कि अगर आपको एजुकेशन है, आप स्मार्ट हैं, बट यू डोंट लुक एजुकेटेड, यू डोंट लुक स्मार्ट, आई मीन यू वर्किंग अगेंस्ट यू. आप कहेंगे अच्छा इसका एग्जांपल, तो मैं यू नो आई स्पीक एट वेरियस फोरम्स, और मुझे about a couple of months ago a journalist organization and they invited me, so I had to speak to all these journalists over there. तो उन्होंने केस बनाया मेरी टॉपिक के ऊपर. उन्होंने कहा हमें सब, आप तो ड्रेसिंग के बंदे हैं, आप तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग की बात करते हैं, हम तो दानिशवर किस्म लोग हैं, हमारा क्या ताल्लुक ड्रेसिंग से, तो क्या मैसेज है आप? तो मैंने कहा ओके, यू नो, गिव मी अ चांस एंड लेट मी टॉक टू यू. वैसे ही मेरे ज़हन में आया, तो उनमें से जो देयर वर अबाउट 70 to 100 जर्नलिस्ट सिटिंग देयर. तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि ये आप जितने लोग बैठे हैं उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? तो दे पॉइंटेड टू अ जेंटलमैन सिटिंग देयर. जी ये सबसे पढ़े लिखे. मैंने उनसे नाम पूछा, मैंने कहा सर आपका नाम, नाम बताया. मैंने कहा सर आपकी एजुकेशन? कहा जी मैंने 6 MA की हो, 6 MAs. एंड लेट मी टेल यू दिस, द गाय लुक लाइक हेल. I mean, disheveled, messy, sloppy, name it, you look like that. तो मैंने I turned over to the audience and I said, अगर ये साहब आपको स्ट्रीट पे मिलते हैं and you don't know who he is, क्या आप अभी इमेजिन करेंगे कि 6 MAs हैं? And they said, you know, they're not going to relate to that. So I said, I rest my case. अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको एजुकेटेड लगना चाहिए. ये नहीं है कि आपको सिर्फ मीटिंग में एजुकेटेड लगना है, आपको हर जगह पे, यू नो, योर पर्सोना, योर पर्सनालिटी, योर अपीयरेंस गोस विद यू एवरी प्लेस. इसके अलावा आपको अकम्पलिश भी लगना चाहिए, आपको अराइव भी लगना चाहिए, आपको कॉम्पिटेंट भी लगना चाहिए. तो ये वो मैसेजेस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मैसेजेस, जो कि आपने अपनी क्लोजिंग से देने हैं. क्यों? क्योंकि आप किसी मीटिंग में जाके ये कह नहीं सकते I'm a trustworthy guy, I'm a successful guy, I'm a you know a very confident guy, I'm you know highly educated guy. You cannot say this. You will look very lightweight अगर कहेंगे. But you have to say it. तो आप साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते यहाँ पे, you know I'm this, I'm this, I'm this. So the only medium you have is through your appearance and through your you know how you present yourself. अच्छा अब आप बात कहेंगे अच्छा जी हमें साहब ये तो सारी बातें हो गई थी, आपने अपनी तजर्बे की बुनियाद पे सारी ये बातें कर दी हैं, लेकिन ये बताइए कोई स्टडी भी है ऐसी, कोई चीज़ प्रूव करती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, कोई रिसर्च है दुनिया में? तो मैं कहता हूँ है. तो लेट मी शेयर दैट विद यू. एक साहब है, उनका नाम है रोमन जेकब्सन. आप लिख लें, इसको गूगल कर लें. इवन व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी यू कैन गूगल हिम आप. ये बंदा नॉन वर्बल विजुअल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट दुनिया में रहा है. ही इज नॉट देयर एनी मोर, बट हिज वर्क इज स्टिल देयर. हार्वर्ड का बंदा, MIT का बंदा, he has done tremendous work. और इसने पूरी एक स्टडी की है जिसमें ये बताता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्लोजिंग क्या है. तो उसके सेलियंट फीचर्स मैं आपसे शेयर करता हूँ. पहला सेलियंट फीचर वही है, वो कहता है कि जी आप एक मैसेंजर भी हैं, आप मैसेज देते भी हैं, आप रिसीवर भी हैं, मैसेंजर भी हैं, आप एक मैसेज दे रहे हैं, यानी जो लोग बैठे हैं वो आपको भी मैसेज दे रहे हैं. एंड देन देयर इज द कॉन्टेक्स्ट. इस कॉन्टेक्स्ट में आप किसी कॉन्टेक्स्ट में मैसेज दे रहे हैं. फिर उसके बाद आता है कि ड्रेस कोड है. अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ है कि देखें मैंने अभी 2-piece सूट पहना हुआ है. लेट्स से इफ आई गो जॉगिंग इन दिस, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट. I mean, it's not the right garment for that. If I go to a village wearing 2-piece suit, 3-piece suit, tie pin, pocket square, again it will be, you know, not the right, you know, attire for that. And similarly, a lot of situations that you walk in there and you know you don't look appropriate. So what he says is this कि आपने राइट कॉन्टेक्स्ट में पहने. अच्छा ड्रेस कोड की बात करता है. आई नो ड्रेस कोड बड़ा ही, अगर आप
let's say right now अगर आप गूगल अप करें how a professional finance professional should look, अगर आप गूगल अप करें तो you will get tons of information. I'm sure you will get tons of information. लेकिन succinct information क्या है, ड्रेस कोड क्या है? अच्छा, ड्रेस कोड के बारे में ये बात करता हूँ, मोस्टली कंफ्यूजिंग वर्ड है ड्रेस कोड में. Usually people are just defined that exactly what you should do, or sometimes they go broad. लेकिन जहाँ ड्रेस कोड नहीं है वहाँ भी ड्रेस कोड है, याद रखें, क्योंकि या एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है. So you are being affected by that in whichever environment you work. तो वो कहता है कि उसकी जो सारी रिसर्च है, it's like a 2 mile long PDF, if you can find it you can see it. लेकिन मैं इसका सेलियन पॉइंट बता रहा हूँ कि वो कहता है कि जो हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं क्लोथिंग के साथ, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं. कहता है सबसे पहले कहता है कि आप सिलुएट के साथ कम्युनिकेट करते हैं. सिलुएट क्या है? सिलुएट है हमारा स्केच. Let's say if I'm a tall guy, then I will look, my sketch is tall. If I am a big guy, my sketch is big. If I'm a short guy, my sketch is short. तो कहते हैं एक तो हम सिलुएट से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं. दूसरा हम कम्युनिकेट करते हैं लाइक द वे हमारे कलर्स जो हैं, कलर से हम कम्युनिकेट करते हैं, कौन से कलर हमने कपड़ों के पहने हैं उससे हम कम्युनिकेट करते हैं. फिर इसके अलावा हम जो कट है, जो स्टाइल है, उससे भी कम्युनिकेट करते हैं. फिर इसके बाद हम टेक्सचर अगर पहना है फैब्रिक का, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन एक बात वो कहता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है फिट, हाउ द क्लोथ्स फिट यू ऑन योर बॉडी, इसके जरिए भी हम कम्युनिकेट करते हैं और बड़ा हैवीली कम्युनिकेट करते हैं. फिर कंडीशन ऑफ गारमेंट क्या है, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं. तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ द गारमेंट. मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो बड़ा कामयाब बंदा हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो मेरी तो बड़ी फर्म है, और मैं देखता हूँ उसने एक ब्लैक सूट पहना हुआ है. पहली तो बात इसकी स्टाइलिंग डायनासोर एज की है. I mean, he's talking about state of the art today, this, that, all that. Picture वर्ड्स मैच नहीं करते. फिर उस काले सूट के ऊपर शाइन बहुत है, उसने बहुत प्रेस कर करके उसने उसके ऊपर शाइन आ जाती है, वेयरिंग दैट. फिर उसके बाद देखता हूँ कि डस्टी है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं. पिक्चर कुछ कह रही है, वर्ड्स कुछ कह रही है, बिलीव इन नॉट डजंट वर्क. तो आपकी जो वो कहता है कि ये कंडीशन ऑफ द गारमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बॉटम लाइन में ये कहता है कि अगर आपकी कंडीशन ऑफ गारमेंट इज पुअर, देन यू आर गोइंग टू लुक पुअर. दैट्स बेसिकली इट. तो अगर आप गरीब लगेंगे तो फिर आपको दुनिया कैसे ट्रीट करेगी? दुनिया ऐसी ट्रीट करती है गरीब को जैसे गरीब को ट्रीट करते हैं. दे डिसमिस देम. You may be the most educated guy, you have the most compelling thing to say, but the initial reaction is that, hey, why should I listen to this guy? He doesn't look the part. Philosophically हम बहुत इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में हम करते हैं. बल्कि अक्सर ये होता है, हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स में कहीं बातचीत हो रही है तो हम देखते हैं, हम कहते हैं यार ये बंदा जो बात कर रहा है, बात तो बड़ी जबरदस्त कर रहा है, बट ही डजंट लुक द पार्ट, लगता नहीं है वो. तो क्या होता है, दैट कट्स इनटू हिज क्रेडिबिलिटी, दैट कट्स इनटू. So why should compromise? Why somebody should compromise? It's beyond me. I mean, हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, कोई $1 million बिलियन डॉलर्स की बात नहीं कर रहे, हम कोई मकान खरीदने की बात नहीं कर रहे, हाउस खरीदने की बड़ी 50 लाख 60 लाख की कार लेने की बात नहीं कर रहे. I mean, it's when I'll explain to you how affordable it is, you'll be surprised that you can look great in within a budget. अच्छा, उसके बाद वो फिट की बात करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं. वो कहता है कि फिटिंग जो अगर आपके प्रॉपर नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके शोल्डर बहुत बड़े हैं, आपके शोल्डर बहुत टाइट हैं, आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं, आपने बहुत लार्ज कपड़े पहने हुए हैं. इन अदर वर्ड द क्लोथ्स डोंट फिट यू राइट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. नाउ ये रोमन जैक्सन कहता है, मैं नहीं कह रहा. वो कहता है कि फिर आप गरीब लगे, आप पुअर लगे. अच्छा, फिर कोई बात आ गई, अगर गरीब लगते हैं तो हाउ फार कैन यू गो? यू विल हैव टू प्रूव योर पॉइंट, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड. मुझे याद आ गया एक दिन अमेरिका में, मैं शोरूम में, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम a guy who wanted to come and see me, that I do consultation and do help people out with dressing and all that. तो बंदा आया, तो obviously he came with some reference, he came to me. तो मुझे पता था कि हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है. अब हार्वर्ड का पढ़ा है, like they have a Harvard education like a ticket, you can go any place and get the job. And when he came, I was surprised. Most of those guys look very sharp.
तो उसका बड़ा बस ढीले डाले कपड़े थे, या कोई वाइन में जितम नहीं था, कलर्स ठीक नहीं थे, शूज ठीक नहीं थे, बेल्ट ठीक नहीं थी। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो मुझे आते ही कहता है, यू नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ओके, गो अहेड, टेल मी। He said, I don't believe in any of the things that you teach. I was surprised कि यार तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आए हो, somebody told you who I am, what I do, तो तुम आके मुझे आते ही कहते हो कि you don't believe in this. So I didn't take it offense नहीं लिया मैंने, तो मैंने कहा okay, let me hear you out. आप क्या सोचते हो? What do you think? You know what he said to me? He said to me that the most important thing is what's up here. In other words, clothing, dressing, appearance doesn't matter. जो 95%, 90% लोग जो the ones who lack in this, they will say this. आप जब पूछ के बात करके देखिए, उनसे पूछ के देखिए, वो यही कहेंगे कि यार दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ब्रेन मेरा ज़्यादा ज़रूरी है, हम परफॉर्मेंस में देखो, मुझे मत देखो। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा यार एक बात बताओ, अगर तुम किसी मीटिंग में जाते हो, आई नो दैट यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड, लेकिन तुम एक क्लाइंट के पास जाते हो, तुम उससे मिलते हो, how would he know that you are a graduate from Harvard? How would he know? सोच में पड़ गया वो। तो मैंने कहा अच्छा okay, let me help you. मैंने कहा you will start the conversation, you start talking about your company, then you start talking about your product, then you start talking about all the good things and everything, and then 10-15 minutes later in the conversation you might drop a hint, oh, when I was at Harvard I learned this or that. I said, is it right? कहता yes. मैंने कहा now tell me something, you have wasted 15-20 minutes of your time. And now that person is not thinking who you are, what you look, the way you look. So I think you will have to work very hard. I give it to you. You're a graduate from Harvard. Eventually, you're gonna convince him intellectually. आप strong हो, आपने जो भी इसके साथ सेल करनी है, किसी कॉन्सेप्ट पे आपने कन्विंस करना कर लेंगे। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, why do you wanna work so hard? यानी तुम स्मार्ट हो, स्मार्ट लगते क्यों नहीं? So Roman Jacobson says the same thing. वो कहता है कि अगर आप गरीब लगोगे तो I mean it's not कि कोई आसमान टूट नहीं पड़ेगा, क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन let me tell you this, it's gonna be a long hill battle for you. तो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल शऊर दिया है, तो हम I think we should use that, and so if we are smart we should look smart. So he talks about the faith, which we're going to talk about shirts and pants and suit कैसे फिटिंग होनी चाहिए, शलवार कमीज कैसे फिटिंग होनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें हम फिटिंग के ऊपर। सबसे बड़ी वायलेशन कहाँ होती है फिटिंग? शलवार कमीज। तो people think like बल्कि अनफॉर्चुनेटली शलवार कमीज को, पाकिस्तानी कौमी लिबास को हमने स्लीपिंग सूट बना दिया, और मैंने देखा है बेशुमार इंस्टेंस पे what people do is they कहते हैं कि मैं इसी में सोऊंगा, इसी में उठूंगा, सुबह दो छटे मारूंगा मुंह पे, नीचे फिर थोड़ा इधर लगाऊंगा, and then I'll go into a meeting and people say सर आप ऐसे, तो मैं कहूँगा मैं तो सादा सा बंदा हूँ, लेकिन this kind of सादगी doesn't cut it. So फिट जो है वो आपकी बॉडी के मुताबिक होनी चाहिए। शलवार कमीज जो है उसकी भी फिटिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे सूट की फिटिंग होती है। इतना आप केयर करते हैं सिर्फ शलवार कमीज की, शलवार कमीज कहीं बहुत खुली तो नहीं है, शलवार कमीज बहुत तंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि शलवार कमीज की फिटिंग, उसका कॉलर कैसा है, स्टिचिंग कैसी है। इस तरह पैंट है, पैंट की आपने फिटिंग देखनी है, फिटिंग उसकी कैसी है, बैगी तो नहीं है ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा तो नहीं है, बहुत चौड़ी तो नहीं है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट। इसी तरह कोट की फिटिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट कि कोट की लेंथ कितनी है, जैकेट की लेंथ कितनी है, कहीं बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, वेस्ट लाइन में बहुत ज़्यादा खुली तो नहीं है, शोल्डर जो वो ये तो नहीं कि शोल्डर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं शोल्डर ऐसे, you have to be very very careful about that. ये वो फिट की बात करता है रोमन जेकब्सन। So we have to, excuse me one second. तो हमने फिट का ख्याल रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। मैं आपसे जो वो फॉर्मूला डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, आई प्लीज ड्रेसिंग, दैट्स एक्चुअली इज माय मेन
entree में मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, तो वो 5 P's क्या है? 5 P's में सबसे पहला P तो पिगमेंटेशन है, मीन्स कलर, जो मैंने आपको गवर्नर जो आपकी बात सुनाई, तो थोड़ा सा और यू नो वी डिग डीपर इनटू इट। कलर में जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला ने जो कलर्स क्रिएट किए हैं वो यू नो मैन काइंड के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट कलर्स हैं। गोरे गोरे हैं, काले काले हैं, हम लोग एशियन हैं, जापानीज जापानीज हैं, चाइनीज चाइनीज हैं। अगर अल्लाह ताला ने सारे लोग एक ही कलर के पैदा कर दिए थे तो बड़ा मुश्किल था आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो पहली हिकमत तो अल्लाह ताला की है। दूसरी हिकमत यह है कि हर कलर जो है वो, इस कलर के भी आप हैं, गोरे हैं, काले हैं या एशियन है, तो आपके ऊपर सर्टन कलर अच्छे लगेंगे, सर्टन कलर ना गलत लुक करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि गोरों के ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं, फिर भी वर्क बैक हमारे ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं। अगर हम गोरों को देखें तो उनकी आई कलर क्या है, ब्लू ब्लू आइज हैं, ग्रीन आइज हैं, दे हैव यू नो हाइजल आइज, स्किन टोन जो है वो उनकी यू नो आइवरी है या यू नो वाइटिश है या पिंकिश है। उनके बाल जो हैं वो लेट्स से ब्लॉन्ड हैं या ब्राउन है। हमारा क्या है, हमारी स्किन टोन जो है या फेयर है या डार्क है या मीडियम है। इस तरह हमारी जो आइज हैं वो ब्लैक मे बी ब्राउन द मोस्ट, और हमारे हेयर जो है वो भी ब्लैक के ब्राउन है, तो टोटली माइल्स अपार्ट। अच्छा, गोरों के ऊपर कौन से कलर अच्छे लगते हैं? फिर हम आ गए थे अपने ऊपर। गोरों के ऊपर जो कलर अच्छे लगते हैं वो अच्छे टोन कलर्स हैं। खिजान के पत्ते देखे होंगे आपने, जो कलर उनमें है वो गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं। अच्छा, उन कलर्स में क्या है, उनमें ब्राउन है, ब्राउन की शेड्स हैं, उनमें ऑलिव मेहंदी कलर उसकी शेड्स हैं, फिर उसके बाद उनमें टैन है, टैन के सारे जो हैं वो शेड्स हैं उसके अंदर, फिर उसमें रस्ट है, पेपरिका है, उसमें ब्रिक कलर है, ऑल दोज कलर्स। खिजां के पत्तों को देखिए, ध्यान में रखिए, वो कलर उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं, वो हमारे ऊपर कैसे अच्छे लग सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या पाकिस्तान में ब्राउन कलर पहना जाता है? लुक अराउंड, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्राउन, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स पहने हुए। You know why they are wearing that? Because nobody's ever told them that this is not your best color. फिर आप मेहंदी कलर देखें खातों पे, लेडीज में, एंड देन मेन में ऑल्सो। मेहंदी का शलवार कमीज ग्रीन के काफ़ी शेड्स यहाँ बिकते हैं, मे बी 50% ऑफ पीपल आर वेयरिंग दैट कलर। तो ये वो सारे कलर्स हैं जो उनके ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अच्छे लगने या ना लगने का भी क्राइटेरिया सुन लीजिए। अच्छे लगने का मतलब ये है, वो कलर जो आपकी स्किन के करीब है, फेस के करीब है, उसकी बात हो रही है। इट कुड बी अ हिजाब, इट कुड बी अ शर्ट, इट कुड बी अ टाई, इट कुड बी अ कोट। जब आप ब्राइट कलर पहनते हैं तो क्या होता है कि आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी आईज मोर वाइब्रेंट होती हैं, यू लुक मोर रोबस्ट, यू लुक मोर फ्रेश। और अगर आप रॉन्ग कलर पहनते हैं तो क्या होता है, आपकी लुक जो है वो, यू लुक टायर्ड, यू लुक लेथार्जिक, यू लुक लेजी, एंड यू लुक लाइक यू वांट टू गो टू स्लीप। So it behooves me that why somebody would wear wrong colors. इसकी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है वो भी सुन लीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं, आप मेरे से बड़े अच्छे तैयार हो रहे हैं, बट यू वेयरिंग द रॉन्ग कलर एंड यू विल लुक टायर्ड, यू लुक लेथार्जिक, यू विल लुक लेजी। तो अगला बंदा सोच सकता है इतना टायर्ड क्यों है, यू नो फोन पे तो बड़ा एक्साइटेड था, एंड यू लुक सो टायर्ड। जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, अगेन यू वेयरिंग रॉन्ग कलर्स, forget about that, you will again look the same, tired, lazy, lethargic. So this look is not going to get you any place. अच्छा, अब हम आते हैं पाकिस्तानी कलर्स के ऊपर। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो ले लें। पहला कलर जो हमारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है वो है व्हाइट कलर। व्हाइट मीन ब्राइट व्हाइट, ऑफ व्हाइट नहीं, एग व्हाइट नहीं, शेल एग शेल नहीं, आइवरी व्हाइट नहीं। पीपल कम टू मी, कई दफा कहते हैं कि आपका ऑफ व्हाइट शर्ट होगी, मैं तो पूछता भाई ऑफ व्हाइट क्यों ढूंढ रहे हैं, नहीं सबको ऐसे ही लगता है कि अच्छा लगता है। कॉन्टेशन क्या है, क्या मतलब है व्हाइट ऑफ व्हाइट शर्ट का? सर आई डोंट नो दिस। तो आपके ऊपर ब्राइट व्हाइट, जो वो लॉयर की बात सुनी आपको मैंने, प्रेसिडेंट ऑफ बार एसोसिएशन, वो हमारे ऊपर अच्छा लगता है। हमारे ऊपर, हमारी स्किन टोन पे, वेदर वी आर डार्क और वेदर वी आर मीडियम, वेदर वी आर यू नो इन बिटवीन, हमारे ऊपर व्हाइट शर्ट, व्हाइट
हिजाब, वाइट दुपट्टा और वाइट शलवार कमीज. I mean, you can wear it like all day long, and that looks very good on us. दूसरा कलर हमारे ऊपर कौन सा अच्छा लगता है? ब्लैक, जेट ब्लैक. जेट ब्लैक होना चाहिए. ब्लैक में कोई अमेजिशन नहीं चाहिए. There's no other mixture in it. कहीं डर्टी वाइट ब्लैक ना हो, हेजल ब्लैक ना हो, हेजल ब्लैक ना हो. वो हमारी स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगता है. एक उसकी कॉनोटेशन है पावर. जब आपने पावरफुल लुक है तो आपने ब्लैक में आना है. ब्लैक ड्रेस ले लें, if you are a woman, ब्लैक सूट ले लें, 2 piece सूट ले लें, and for that matter, and it's black to work. एक साहब है, उनका नाम है बिलावल भुट्टो साहब, and I've been watching him for the last 2 years. अब थोड़ा सा रिसेंटली उन्होंने कलर थोड़े चेंज किए हैं, लेकिन for about a year and a half he only wears black शलवार. अब पूछे भाई आप सिर्फ ब्लैक शलवार क्यों पहन रहे हो? Now he is no fool. Don't think this. I mean, the guy knows it. Black is power, and that's why we're black. So black आपके ऊपर, that's a very very regal color, also very sophisticated color. आपने sophisticated लगना है, आपने polished लगना है, आपने refined लगना है, तो I think the black would definitely get the job done. तो आपकी closet में black शलवार कमीज, even black shirt और black suit, you must have it in your wardrobe. तीसरा कलर जो हमारे ऊपर बड़ा अच्छा लगता है वो है ब्लू के शेड्स. उसमें आपका स्काई ब्लू है, देन मीडियम ब्लू है, उसके बाद आपका फ्रेंच ब्लू है, एंड देन इट कम्स टू नेवी ब्लू, व्हिच इज द गॉर्जियस कलर. नेवी ब्लू, तो आई विल टेल यू दिस, ब्लैक तो है ना पावर, इट्स ऑल अबाउट पावर. यानी ब्लैक सूट पहना है तो आपका एक्चुअली यू आर इस काइंड ऑफ अ मोर इंटिमिडेटिंग लुक. आप कह रहे हैं कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, टॉक टू मी फ्रॉम अ डिस्टेंस. लेकिन जो डार्क नेवी है इसकी कॉन्नोटेशन बड़ी जबरदस्त है, एंड आई थिंक दैट कुड प्रोबब्ली बी वेरी वेरी गुड सूट. नॉट प्रोबब्ली बट डेफिनेटली इन योर केस, आप फाइनेंस के बंदे हैं. इसमें 3 चीजें हैं डार्क नेवी. पहली चीज इसमें यह है कि इट हैज बोथ पावर एंड अप्रोचेबिलिटी. आप जिस फील्ड में हैं आपने सिर्फ पावरफुल ही नहीं होना, आपने सिर्फ अथॉरिटी नहीं शो करनी है, आपने साथ में अप्रोचेबल भी होना, सो दैट पीपल कम टू यू, टॉक टू यू, open up and tell you your needs and all that, and then you're gonna build that whatever financial portfolio for them. So accessibility has to be there. So एक ये है blue dark navy में it has power, it also has approachability. दूसरी बड़ी चीज में ये है कि ये it falls well with all socio-economic level people. हमने बात की थी ना socio-economic level की पहले, तो आपको तो नहीं पता ना जिससे बात कर रहे हैं कि इसका सोशियो इकोनॉमिक लेवल क्या है, हाउ मच मनी ही हैज, व्हाट फैमिली बिलोंग्स टू. अगर फर्स्ट मीटिंग में तो बिल्कुल नहीं पता होता. तो उसमें ये अगर कोई एफ्लुएंट बंदा है, सेगमेंट से बिलोंग करता है, वो भी इसकी रिस्पेक्ट करता है डार्क नेवी की. व्हाई? बिकॉज ही आल्सो वेयर्स इट, सो ही सेड, ओह ही इज माय काइंड ऑफ गाय, माय काइंड ऑफ गर्ल. और जो मिडिल क्लास लेवल से बिलोंग करता है वो उसके साथ भी रेजोनेट करता है. he sees it like very respectable color. और जो लोअर लेवल मिडिल से बिलोंग करता है, लोअर से बिलोंग करता है, वो तो उसको सल्यूट करता है. तो ये इसकी दूसरी रीजन है. तीसरी रीजन जो है डार्क नेवी की, वो ये है कि यू कैन गेट मोर माइलेज आउट ऑफ इट. माइलेज का मतलब क्या है? इट मींस यू कैन वेयर इट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड विल बी अप्रोप्रिएट. किसी बंदे ने आपको ये नहीं कहना यार कि आप फिर वही डार्क नेवी सूट पहन के आ गए हो. लेकिन अगर आपने ब्लैक पहना है तो ब्लैक, आई टेल यू दैट इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट कलर एंड इट्स गोना शो एंड ऑल दैट. तो आपके पास ब्लैक में, जैसे मैंने कहा कि आपके पास हिजाब भी होना चाहिए ब्लैक में, आपके पास ब्लैक ड्रेस भी होना चाहिए इफ यू आर वुमन, एंड इफ यू हैव ब्लैक सूट और ब्लैक शलवार कमीज, आई थिंक इट गोस वेरी. I'm sorry, I went to black, dark navy. So dark navy is your best friend there. Then there are shades of gray. हमारे वो बड़े अच्छे लगते हैं. ट्रू ग्रे होना चाहिए. ट्रू ग्रे का क्या है? ब्लैक और व्हाइट को मिला के. अगर उसमें थोड़ी सा अमेजिश है किसी और कलर की तो डर्टी सा ग्रे बन जाता है. आपने ट्रू ग्रे में जाना है. तो उसमें 3 कलर्स हैं. आप लाइट ग्रे पहन सकते हैं, आप मीडियम ग्रे पहन सकते हैं, आप चारकोल ग्रे पहन सकते हैं. तो तीनों कलर आपके ऊपर बड़े सूट करेंगे. कई लोग मुझे कहते हैं हमेशा आप ज्यादा ऑप्शन नहीं देते. मैंने कहा ऑप्शन नहीं, गिन लीजिए कितने कलर मैंने बताए. 8-10 कलर तो मैंने बता दिए. हाउ मेनी कलर्स यू वांट टू हैव. और खासतौर पर कलर में कॉन्टेशन को भी याद रखें कि कलर कहता क्या है, कलर की लैंग्वेज क्या है, कलर बोलता है. तो आपने वो खासतौर पे अपनी मीटिंग के साथ उसको एसोसिएट करें. इसको मैं मिलने जा रहा हूँ, मुझे पावर लुक चाहिए,
मुझे बिजनेस कैजुअल लुक चाहिए, मुझे इनफॉर्मल लुक चाहिए, तो आपने कलर्स के साथ खेलना है, कलर के साथ आपने उसको यू नो यू विल अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स देयर। तो ये है कलर की बात। पेंट्स के कलर की बात कर लेते हैं। पेंट्स में बेसिकली 4-5 कलर्स हैं, उसके बगैर और कलर तो आई थिंक पेंट्स डोंट लुक गुड, स्पेशली इन प्रोफेशनल मैन। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ड्रेस पेंट पहन, वाइट ड्रेस पेंट। क्यों ही आप चीनोज में आ जाते हैं, जीन्स में आ जाते हैं, स्नीकर्स में आ जाते हैं, कैजुअल। मैं इसको कैजुअल नहीं कहता, मैं स्ट्रीट वेयर कहता हूँ। आप स्ट्रीट वेयर में ऑफिस में आते हैं तो व्हाट मैसेज आर यू गिविंग to your superiors, what message you're giving to your subordinates, what message you're giving to your clients, and clients could come anytime. I mean, आजकल Zoom पे भी एकदम से यार I want to have a meeting with you, or Skype पे, and they could walk in if you are walking situation, they can walk. You have no excuse. तो आपने मेक श्योर करना है कि आप you must look appropriate all the time. तो पैंट के जो ड्रेस पैंट मैं सजेस्ट करता हूँ, आप चीनोस और जीन्स जो है उसे, जैसे मैंने स्ट्रीट वेयर कहा है, इसके लिए रहने दें। आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, आपने को बारबेक्यू करना है, घर में फ्रेंड्स को बुलाना है, इट्स ऑल गुड फॉर दैट। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, यू कैन वेयर दैट। बट वर्क एनवायरनमेंट में आई वुड से प्लीज अवॉइड दिस। तो ड्रेस पैंट में कलर मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कलर है ब्लैक पैंट। ब्लैक पैंट जो है ना वो दैट इज द मोस्ट वर्सटाइल पैंट यू कैन हैव, और ये हर कलर शर्ट के साथ इट गोस विद दैट। So you must have, I would say, even have 2 pairs of black pants. And for a woman, trousers if you like that, same applies to you. इसके अलावा जो सेकंड जो कलर्स हैं वो हैं ग्रे के कलर्स। चारकोल ग्रे, ब्यूटीफुल पैंट्स, ब्यूटीफुल पैंट्स। So उसके बाद है लाइट ग्रे, that also, by the way, they also go very nicely with different colors। white शर्ट के साथ पहन लें, बेबी पिंक अगर पहनते हैं उसके साथ पहन लें, अगर आपने ब्लैक के साथ पहनना है और ग्रे के साथ। याद रखें, जितना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे ना उतना ही अनसोफिस्टिकेटेड होगा, जितना कम कॉन्ट्रास्ट होगा उतना सोफिस्टिकेटेड होगा। It's another rule that you should know. So closer to the pant color and shirt color, except the white and black. अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, बड़ा आपने ख्याल रखना है कि आपका कद कितना है। अगर आप छोटे कद के हैं, if you are a man or woman, अगर आपने कॉन्ट्रास्ट में कपड़े पहनने हैं and you have to be short means 5'6" and under। अगर आप कद 5 फुट 6 इंच से कम है, ये 5 फुट 6 इंच आप शॉर्ट समझे जाते हैं, तो उसमें आपने कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करना। जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे तो होगा क्या कि एक्चुअली यू आर डिवाइडिंग योरसेल्फ इनटू हाफ। आपने आधा डिवाइड कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आई जो है उसको ट्रेंड किया है कैसे देखने के लिए कि वो टॉप से शुरू करती है और बॉटम पे जाती है। जो ही कलर चेंज होता है तो आई रुक जाती है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर वेयरिंग व्हाइट जैकेट फॉर एग्जांपल एंड ब्लैक पैंट्स, तो व्हाइट के बाद वो रुक जाएगी आई। आप लेट्स से 5 फुट के बंदे हैं, जो 5 फुट के 5'2", 5'3" हैं, तो उसके बाद वो ब्लैक पे दोबारा शुरू करेगी। तो एक्चुअली यू आर डिवाइडेड इनटू हाफ, तो आप अपने आप को 2.5 फुट करते हैं। तो याद रखें कि इस कलर में कॉन्ट्रास्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शॉर्टर साइड पे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करना। तो इसके अलावा जो और कलर्स तो उसमें पैंट में आ सकते हैं, एक उसे कहते हैं ब्रिटिश टैन, जैसे बिल्कुल टैनिश का कलर होता है, खाकी कलर जिसे कहते हैं, उसकी पैंट भी बड़ी अच्छी है। नेवी की पैंट बड़ी अच्छी है, नेवी कलर की। सो इफ यू आर टेकिंग नोट्स, दीज आर द पैंट्स दैट आई वुड वेयर। आई वुड स्टे अवे फ्रॉम एनी अदर थिंग। अच्छा, आजकल एक नया रिवाज हुआ है कि ये पैंट जो है ना वो चेक की पैंट पहननी है या स्ट्राइप की पैंट पहननी है। I don't know. I mean, why would somebody want other people to emphasize on the bottom? जो ही आपने चेक की पैंट पहनी, but actually I had a guy that he wasn't from the accounting field. He insisted कि यार मैं इसको ना चेक की पैंट क्यों नहीं पहन सकता। मैंने कहा पहनने को क्या है, जो मर्जी पहन। लेकिन विजुअली ये है कि जो ही आप चेक की पैंट पहनते हैं या कोई और प्रोनाउंस आप पैंट पहनते हैं टेक्सचर की, तो आई गो देयर। Why I should go there of whoever is looking at you? I should go here. This is the focus. ये वो frame है जिसमें बात होती है। This is the frame, and this is the frame that we talk, and this is the frame we should be careful about. तो उसमें by the way, ये जो मैंने खाकी कलर की पैंट बताई है वो जो ड्रेस पैंट की बात कर रहा हूँ, चिनोज जीन की बात नहीं कर रहा।
So these are the about the colors that pant suiting color में मैंने बताया कि black you should have, then dark navy you should have, या थोड़ा सा brighter जो है ना वो भी चल सकता है. इसके अलावा चारकोल कलर बताया है, आपको ग्रे का कलर बताया. So this is the story with pigmentation. और now we move on to the second P. लेकिन इसके बारे में एक बात कहूँगा कि let me say it right now. I have not seen you and I have not met you and I have not obviously seen your closet. I don't know what kind of clothes you have. लेकिन मैं guess करता हूँ, and I've been doing this in all my presentation with thousands of people so far. तो मैं इनसे पूछता हूँ कि यार आपके क्लोजेट में जितनी कपड़े हैं उनमें से कितने % आप पहनते हैं. तो यकीन करें कि it comes to like maybe 30 to 40%, 60%, 70% we don't wear them. तो मैं कहता हूँ वो कपड़े आप क्यों नहीं पहनते. तो when you ask them or you ask yourself, तो आप देखेंगे कोई कलर आपको अच्छा नहीं था वो आप इसलिए नहीं पहन रहे, किसी की स्टाइलिंग ठीक नहीं है, किसी की कॉलर ठीक नहीं है, किसी की फिट ठीक नहीं है. So my question is this: how did they get into your closet? वो कैसे आए? क्या इतना ज़्यादा गिफ्ट दे दिया किसी ने आपको? Obviously not. So these are buying mistakes. तो कलर में आपने buying mistake नहीं करनी. I think it's so important कि बाकी 4 पीस को भूल जाए. अगर आपने right कलर नहीं लिया तो आपने चाहे टाई खरीदनी हो, चाहे आपने शर्ट खरीदनी हो, चाहे आपने सूट खरीदना हो, चाहे आपने शलवार कमीज खरीदनी हो, paramount is the color. If the color is not right, we cannot go forward. And especially सेल पे जब चीजें लगती हैं तो pay attention to this. मेरा अपना व्यू है सेल पे चीजें क्यों लगती हैं. सेल पे चीजें इसलिए लगती हैं कि they can't sell it on a regular price. जिसका मतलब है जंक रह गया, साइजिंग ठीक नहीं है, इम्परफेक्ट है, उसमें कोई परफेक्शन नहीं है, या ऐसा पुराना स्टाइल चल रहा है. I mean obviously they are not they're not helping us, they are helping themselves, these merchants. तो आपने जितनी गलतियां होती हैं सारी वो सारी की सारी सेल पे हो गया होती है, क्योंकि सेल पे लगा ना, बंदा कहता चला ठीक है इतनी मिल गई शर्ट कौन सा जाती कोई बात नहीं, ये कलर क्वेश्चनेबल ले लो, पर आई टेल यू सम दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. दूसरा पी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब आप पूछेंगे कि जी मुझे फैशन को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, या मुझे किस चीज़ को फॉलो करना है. तो मैं इजी तो मेरे लिए ये है कि मैं कह दूं फैशन को फॉलो कर लें, ट्रेंड को फॉलो कर लें. I'm a fashion guy, I'm a trendy guy, I went to a fashion institute of technology, but I will not say that. However, I will say this, that fashion and trend is still important. अच्छा आपने लगना कैसे है? अगर आपने फैशन ट्रेंडी नहीं लगना तो क्या लगना है? मैं कहूँगा कि आपको क्लासिक लगना है, आपको एलिगेंट लगना है, आपको करंट लगना है, विद टाइम्स लगना है, आपको लगना है कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लगना है. क्योंकि अगर आप कंटेम्प्रेरी मॉडर्न नहीं लगेंगे तो वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी मॉडर्न, and believe it or not, again the picture and words are not going to match, and it's going to give you a disconnect, and then disconnect turns into distrust. तो आपने जो उसमें ड्राइविंग फैक्टर क्या है अगर फैशन ट्रेंड में, तो ड्राइविंग फैक्टर आपकी बॉडी टाइप. आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप शॉर्ट हैं, आप टॉल हैं, आप हैवी हैं, क्या है, दैट डिटरमाइंस द स्टाइलिंग. अच्छा मेरे पास लोग आते हैं और वो आके let's say somebody's like really chubby and somebody's really big, and I don't want to use the word fat but heavy. वो आके मुझे कहता है कि सर स्लिम फिट आपके पास होगा, स्लिम फिट, क्योंकि आज का स्लिम फिट चल रहा है. तो मैं उससे देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार व्हाई स्लिम फिट फॉर यू. स्लिम फिट तो पॉपुलर है आजकल, स्लिम फिट तो दैट्स इन फैशन. नाउ इमेजिन कि एक बंदा जो है जरा हैवी है, तमी जरा बाहर निकली हुई है, शोल्डर बड़े हैं, हिप्स बड़ी हैं, अगर वो स्लिम फिट पहनता है, वो एक फाइनेंस का प्रोफेशनल है, एंड व्हेन ही गोज इनटू अ मीटिंग व्हाट्स गोना हैपन, तमी जो है और प्रोमिनेंट हो जाती है, बल्कि बात को तो ऐसे लगता है जैसे वो बटन नहीं है अभी उसका पाप जो मिडल में बटन लगा होता है, सो टाइट, and the person you look at is very uncomfortable, this and that, and then and the shoulders are huge and biceps are huge and hips are huge. It's not a great look. It's not a great look. तो अगर आप heavy side पे हैं, मैन वुमन दोनों, आपने टाइट कपड़े नहीं पहने. अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, let me tell you, God bless you.
It's not gonna work for you. अगर आप short है, तो short में तो there are a lot of issues. तो short में सबसे पहले स्टिग्मा है ना पाकिस्तान में, छोटा छोटा कह के उसकी सेल्फ स्टीम बड़ी लो होती है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर वो कोट पहनता है, कोट की लंबाई जरा लंबी है तो इससे लगता है जैसे अपने वाला साहब के कपड़े पहना है. अगर वो छोटी जैकेट पहनता है तो ऐसे लगता है भाई के छोटे भाई के कपड़े पहना है. उसके लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है, द क्लोथ मस्ट फिट यू इम्पैक्टेबल. आपके पास रूम फॉर एरर इज जीरो. आपका कॉलर फिटिंग जो है, अब अगर आपका कॉलर राइट फिट नहीं हो रहा, बहुत टाइट है, ऐसे करके टाइट है, बहुत खुला है कि 2-4-5 मीलियंस के अंदर चली जाती हैं. बाय द वे रूल ऑफ थंब इज दिस, if you can insert 2 fingers nicely by having this button closed in the tie, that's the right color. So you want to have room to so that you can breathe, and at the same time it's not very loose. तो शॉर्ट बनने के लिए प्रोपोर्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा बात याद रखिए, काफ़ी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, दुनिया में भी, जो शॉर्ट के साथ एक्चुअली दे नॉट सर्विसिंग दैट, व्हाट दे डूइंग इज दे आर प्लेइंग विद देयर इमोशन. वो कहते हैं कि हमारे पास शॉर्ट की कलेक्शन है. अच्छा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने स्मार्टली फॉर देम, नॉट फॉर द कंज्यूमर, टॉल को शॉर्ट कर दिया. टॉल का पैटर्न है, उसको शॉर्ट कर दिया. तो अब हुआ क्या है कि उसकी प्रोपोर्शन चेंज नहीं की. इसका मतलब जो पॉकेट है जहाँ आनी चाहिए इसकी प्लेसमेंट वो नीचे चली जाती है, वेस्ट और नीचे चली जाती है, हिप और नीचे चली जाती है. सो दैट पर्सन लुक्स रियली गोofy. तो उसको कहते हैं कि ये शॉर्ट है. तो प्रोपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप शॉर्ट हैं. एक और मैं आपको टिप दूंगा, अगर शॉर्ट हैं तो ज्यादा कलर ब्लॉक्स के साथ मत खेलो. Do not have too many colors going, because that's going to divide you into different segments, and again you're going to look shorter. आप खुले कपड़े पहन के, लंबे कपड़े पहन के ये ना शो करें कि आप लंबे हो गए. एक्चुअली इट्स गोना मेक यू इवन शॉर्टर. तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है. फिर आपने डिजाइन का, पैटर्न का खास तौर पर ख्याल रखना है. लेट्स से फॉर एग्जांपल योर स्मॉल फ्रेम्स और आप पहनते हैं चेक्स बहुत बड़े या आप स्ट्राइप्स बहुत बड़ी पहनते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू. मैन वुमन डजंट मैटर. Accessories का आपने ख्याल रखना है. If you're a woman and you're a short woman and you're carrying handbag or pocketbook which is very large, it's not going to work for you. I can show you that. तो आपने प्रोपोर्शन का खास तौर पे ख्याल रखना है, पैटर्न का खास तौर पे ख्याल रखना है. उसके बाद अपने फिट का जो मैंने कहा कि वो पैरामाउंट है. अगर आप टॉल स्किनी, वेरी टॉल वेरी स्किनी, तो फिर आपने कैसी ड्रेसिंग करनी. अब लाजिम बात है कि टॉल एंड यूर स्किनी, you're probably very young and you are coming out of the gates. तो आप कहते हैं कि स्लिम फिट पहन लेता हूँ, तो स्लिम फिट पहन लेता है, तो वो तो और पता लगेगा. तो उसमें थोड़ी सी फॉरगिविंग फिट होनी चाहिए. कपड़ा थोड़ा सा विल टेक यू समथिंग टेक्सचर, थोड़ा सा उसमें सब्सटेंस हो, सो दैट गिव्स यू बॉडी, दैट गिव्स यू सब्सटेंस. So that's about the we're talking about short people there, not tall people, tall and skinny people. So if you are in between any place, the main thing is this: the clothes must fit you. If they don't fit you, and if they don't look right, then I tell you something: no amount of money, it doesn't matter कि आपने कितना महंगा खरीदा है, कितना महंगा चलवाया है, कहाँ से import करवाया है, it does not matter. कौन सा brand है, it doesn't matter. You're not gonna look that way. तो तीसरा P जो है वो है पर्सनैलिटी. कहते हैं पर्सनैलिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए. तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, कपड़े कौन से पहन रहे हैं, ये तीसरा P है. यानी 2 P हमने कर लिए हैं. हमने कलर राइट लिया है, और जब आपने कलर राइट कर लिया उसके बाद आप देखना है फिट कैसी है मेरे ऊपर. तो लेट्स से यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड गारमेंट व्हिच इज वेरी वेरी अपीलिंग टू यू बट डजंट फिट यू, डोंट बाय इट. कलर राइट है, फिटिंग भी राइट होनी चाहिए. फिर तीसरे पे आते हैं, फिर आपने देखना है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या उस पर सूट करता है. अच्छा उसमें पर्सनैलिटी टाइप्स तो बहुत है. इमेज कांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 पर्सनैलिटी टाइप्स. आई मेड माय ओन 2 पर्सनैलिटी टाइप्स. एक है लीडर टाइप, एक है फॉलोअर टाइप. तो देखना ही है कि आप लीडर हैं या आप फॉलोअर हैं. Now लीडर में हम ग्लोबल लीडर की बात नहीं कर रहे. You are let's say team leader, you are a manager, so people are reporting to you. चाहे एक बंदा 2 बंदे, doesn't matter. आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, you are a leader. घर के आप लीडर हैं. So you are a role model there.
तो लीडर जो है ना वो थोड़े से प्रोनाउंस कपड़े पहन सकता है, थोड़ा सा मोर स्टाइलिश लग सकता है, थोड़ा सा मोर कलर्स का एक्सपेरिमेंट कर सकता है. रीजन इज दिस दैट ही कैन कैरी इट और शी कैन कैरी इट. अगर आप कैरी नहीं कर सकते देन डोंट वेयर इट. तो फॉलोवर जो है 95% द पॉपुलेशन इज फॉलोअर. आई मीन नथिंग रॉन्ग टू बी अ फॉलोअर. कैन यू इमेजिन अगर सारे लीडर्स ही होते तो फॉलोअर्स कौन होता? I mean, they do a tremendous job getting plans implemented, vision implemented. They do Allah Taala ने इसलिए different positions create की हुई हैं. So अगर आप follower हैं तो फिर आप आप ऐसे हैं कि नहीं आप आगे जाइए मैं पीछे ठीक हूँ, आप आप बोलिए मैं पीछे. If you're that sort of person, then I think that more traditional clothing, more conservative clothing will more apply to you. उसकी जो पंच लाइन ही है वो ये है कि क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन, मैन और वुमन कैरी द क्लोथिंग. तो आपने कैरी करना है. कैरी करने से मुझे याद आई चंद और बातें. ये मैं पता नहीं आप देख रहे हैं टाइप पिन में ऊपर आपसे दिखाता हूँ. अब मैंने ये टाइप पिन लगाई हुई है. लोग मुझसे कहते हैं कि जी टाइप पिन लगानी चाहिए कि नहीं. तो मैं उन्हें कहता हूँ मैंने एक बात बताओ टाइप पिन वाले बंदे हो तो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है तो उसी में टाइप पिन वाला बंदा. मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइप पिन लगा के आप टाइप पिन ही को बार बार देखोगे आप कॉन्शियस हो जाओगे तो यू वेयर इट. एनी आइटम which makes you very conscious about what you're wearing and you keep on looking at it or touching it or it's in your mind that you look very special, this that whole bit. चाहे वो डिजाइन है, चाहे वो कलर है, चाहे वो आर्टिकल है, चाहे वो ज्वेलरी का पीस है, that's not appropriate for you. Means that the moment you become conscious. एक और चीज है ये देखें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ. ये पॉकेट स्केयर इसको कहते हैं. राइट हियर आई एम वेयरिंग माय पॉकेट स्केयर. दिस इज पॉकेट स्केयर. रुमाल नहीं है, हैंडकरचीफ नहीं है, some people call it. इसमें भी पूछते हैं लोग कि पॉकेट स्केयर पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए. तो मैंने ये कहता हूँ कि यार आप पॉकेट स्केयर कैरी कर सकते हैं. मेरे कैरी का मतलब क्या है? मैंने कहा अगर आप पॉकेट स्केयर पहन के अगर बहुत कॉन्शियस हैं यू आर वेयरिंग पॉकेट स्केयर देन डोंट डू इट. ठीक है. लाइफ में ना लोग ऑथेंटिक लोगों को पसंद करते हैं, लोग ओरिजिनल लोगों को पसंद करते हैं. एक शलवार कमीज पहनने वाला बंदा है अगर वो मेरे पास आता है मैं तो पूछता हूँ आप अक्सर क्या पहनते हो कभी शलवार कमीज. तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप सूट पहनना शुरू कर दें. आई विल नेवर नेवर. हाँ ये मैं जरूर कहूँगा शलवार कमीज की फिटिंग कैसे होनी चाहिए, शलवार कमीज का कलर कैसे होना चाहिए, फिर शलवार कमीज को अपने ड्रेसअप कैसे करना है. हाउ यू गोना लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जिसमें आप वेस्ट कोट है वो पहन सकते हैं या आप कोट के साथ पहन सकते हैं. बाय द वे दैट्स द वे टू डू इट. अगर आप देखें इमरान खान साहब जो जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं मैं वेस्ट कोट नहीं पहनूंगा. स्टेट अवे. वो जबरदस्ती इनको वेस्ट कोट पहना दी. नहीं सर आपको पहननी है. एंड लुक एट हिम टुडे. मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा बट आई थिंक ही हैज कम अ लॉन्ग वे टू विजुअली dress better and I think it's a great look what he has now. And now you will never see him like just only shalwar. Very very rare. Either he's wearing a waistcoat or he's wearing with a coat. By the way, trend Zardari Sahab ne shuru kiya tha, originally many years ago. And people at that time thought about this. They are same color ki waistcoat hai, same color ki shalwar kameez hai. This guy doesn't know how to put combinations together. Actually, he did know how to put the combination together. Whether he learned it from New York or London, that's a different story. So, वो एक look है जिसे कहते हैं monochromatic look and all that. So you have to be very careful about that. आपकी जो जैसे मैंने कहा कि personality पे आप कपड़े सूट करने चाहिए. आपको पता होना चाहिए आपकी personality कैसे है. तो फिर थोड़ा repeat कर लेते हैं so that you get it right, really memorize it. Color right होना चाहिए. आपने कोई ऐसी चीज नहीं खरीदनी. डोंट स्पेंड योर हार्ड अर्न मनी ऑन समथिंग दैट द कलर डजंट लुक गुड ऑन यू. देखें स्किन टोन के पास रखते देखें इट लुक्स गुड ऑन यू. आपकी स्किन ग्लो करती है नहीं करती, आई थिंक आप वाइब्रेंट होती है नहीं होती, आप मोर एनर्जेटिक लगते हैं, मोर फ्रेश लगते हैं. इफ नॉट देन प्लीज लीव इट देयर. डोंट नॉट पे इवन अ पेनी फॉर दिस. फिटिंग करके देखें, पहन के देखें. अगर आपके को फिटिंग प्रॉपर नहीं है बिलीव इन लीव इट देयर. इट्स नॉट गोइंग टू डू यू एनी गुड. और तीसरी बात है पर्सनैलिटी के कपड़े सूट करने चाहिए. अच्छा चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव अ मिक्स्ड बैग हियर. कुछ लोग आपके सी लेवल के हो सकते हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट के लोग हो सकते हैं, कुछ दे आर कमिंग आउट ऑफ द गेट्स. सो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन.
लेकिन मैं ये कहूँगा कि पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कपड़े हैं आपकी पोजीशन पे सूट करने चाहिए, आपके मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप सी लेवल के बंदे हैं तो भाई आपको सी लेवल का बंदा लगना चाहिए। बहन भाई, यू शुड लुक लाइक सी लेवल गाय। अगर आप सी लेवल के बंदे हैं, आप सी लेवल के नहीं लगते, तो लेट मी टेल यू दिस, आई मीन अगेन, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपकी इफेक्टिवनेस में डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग मिसिंग देयर। तो आई वुड से कि मिडिल मैनेजमेंट करने हैं तो मिडिल मैनेजमेंट का बंदा लगना चाहिए। इफ यू आर कमिंग आउट ऑफ द गेट्स, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इमेजिन लाइक यू लुक लाइक ए सीईओ ऑफ द कंपनी। आप पॉकेट स्केल लगा लेते हैं, टाई पिन लगा लेते हैं, आप कफ्टिंग वाली शर्ट पहन लेते हैं, आप रोलेक्स की वॉच पहन लेते हैं, यू लुक वेरी लेविशली ड्रेस्ड। लेट मी टेल यू, इट्स कॉल्ड ओवर ड्रेसिंग। तो आपने ओवर ड्रेसिंग नहीं करनी और आपने अंडर ड्रेसिंग नहीं करनी। लेकिन इंटरव्यू की बात हो रही है, जरा इसमें एक दो चीजें और ऐड कर देता हूँ मैं, कि जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आप, आपने उसके लिए ड्रेसअप नहीं करना, आपने 2 लेवल अबव के लिए ड्रेसअप करना। क्यों? क्योंकि जो एचआर वाले बंदे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है जो आपको हायर कर रही है, they are looking for winners, they are looking for team leaders, they want to invest money only on winners। तो वो अगर देखते हैं कि अगर ये बंदा जो इस लेवल का नहीं लगता, तो they start looking down at in terms of your promotion, in terms of this। So I would advise कि आपको 2 लेवल, do the research। आप कंपनी जहाँ जहाँ जॉब करना चाहते हैं, उस कंपनी का ड्रेस कल्चर देखिए, उनके सीईओ देखिए, उनके मैनेजर देखिए, हाउ दे ड्रेस। आई मीन एवरीथिंग ऑन द फेसबुक, एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट। अब थोड़ा सा डीपर करेंगे तो यू विल गेट इट। वो आप देखें वहाँ पे ड्रेस कोड क्या है, लोग कैसे पहनते हैं। 2 लेवल अबव का जो भी व्हाटएवर दैट 2 लेवल्स अबव, एक्चुअली दैट अप्लाइज टू नो मैटर व्हाट यू डूइंग, व्हाट पोजीशन यू आर इन। अगर आप अच्छी बड़ी कंपनी में सीएफओ लगना चाहते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर, it's not a small thing। अगर एक बिग एंटरप्राइज में सीएफओ, मेरे पास एक सीएफओ आए तो कह रहे हमसे आपसे बात के बारे में सुना है कि यू पुट पीपल टुगेदर। तो मैंने कहा सर मसला क्या है आपका, so he opened up and he said, I have so much experience, I'm a CFO and this quite large organization, but he was looking for multinational companies। उस तरह के सोच रहे थे, गुजर जाए वो। कहते यार जहाँ भी जाता हूँ जॉब पे, जहाँ आई पोटेंशियल एट दिस बट आई डोंट गेट सिलेक्टेड। तो मैंने कहा फिर व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज? तो कहने लगे यार आई थिंक इट्स माय आउटफिट, इट्स माय पेरेंट्स एंड ऑल दैट, दे आर नॉट लुकिंग एट मी एट दैट लेवल। तो आपको सी लेवल के बंदे हैं तो आपको सी लेवल, अगर आप एस्पायर करते हैं कि आपको वहाँ जाना है, तो आपको उस तरह की ड्रेसिंग आज करनी है, ना कि वहाँ पहुँच के। अच्छा, आप ये कहेंगे यार इतनी बड़ी बात है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। मैं आपको थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। अमेरिका में आई हैड ए क्लाइंट एंड ही वाज द सीईओ ऑफ अ बिग पब्लिक कंपनी। आपको बताया यू आर फाइनेंस पीपल, पब्लिक कंपनी वो है जो दे हैव अनलिमिटेड फंड्स, स्टॉक पे उनका शेयर सेल करता है। So he was a very, by the way, this guy was when I met him, he was like really very well dressed guy. And I told him few things and he liked it. And then he started doing business with me. So I became his image and wardrobe consultant. So one day he called me and he said to me, Samit, I have a job for you. I said, sure, sir, tell me. He said, I'm retiring. I've decided to retire. Retirement age 165 years there. And he said that, I want my VP, vice president, I want him to, get this job. I've been grooming him, I've been mentoring him rather, and he lacks in one thing. I said, I know, because I've seen the guy, Mitch इसका नाम था। तो Mitch सूट शर्ट आई तो पहनता था, लेकिन cheapest सूट, cheapest shirt, cheapest tie, cheapest shoes। Don't think that it's not evident, it's not, right to somebody's face। क्योंकि आप चीप कपड़े पहनते हैं तो चीप कपड़े नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करें, लेकिन यार अपने मुकाम के मुताबिक तो करें ना। तो एनीवे, वो मिच ने मुझे कॉल किया एंड he said, oh, the CEO of the company spoke to you and I want to come and I want to talk to you। तो मैं उसके आने से पहले ही मुझे पता था कि अब ये जो है ये पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस कि इंटरव्यू एक नहीं होता, बेशुमार इंटरव्यू होते हैं, बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं। पब्लिक कंपनी में वैसे डजंट मैटर कि आपने इवन विदन किसी बंदे को प्रमोट करना चाह रहे हैं या उसको आप बैकअप करना चाह रहे हैं, स्टिल यू हैव टू एडवर्टाइज।
and you have to get the outside people. So competition is just, uh, quite tough. So he came to me, and on that day when he came, I had all the fabric swatches laid out and all that. So मैंने कहा, Mitch, let me tell you, I will give you one sentence presentation. कहता one sentence presentation. I said, yes, one sentence presentation. So he said, okay, go ahead. And I said, you're running for president of the company. You must look presidential. That's the end of it. No more to say anything, any more to say. So मुझे कहता, that makes sense. I said, yes, it makes sense. And then I showed him I said, look, you're going to go through the interview. Same people are going to interview probably, many times. And you can't just do this one suit. हमारे को 5-6 suits होने चाहिए. So I laid out all the entire combination from which I thought for his status he should be wearing. उन दिनों की बात is about 15 years ago. And he looked at all that, and I told him, he said, what's the investment? How much money it's going to cost me? And I think at that time, if I correctly remember, I think it cost about $5,000 about. So he heard what I said. He's very excited about it, and then he said to me, hey, can I sleep on it? Sure, you can sleep on it. तो मुझे पता होना क्या है. इसने जाना घर, इसी ने अपनी वाइफ से कहना है, I mean with all due respect, अगर वाइफ चाहती कि sophisticated लगे, refined लगे, polished लगे, जैसे लगना चाहिए एक C level बंदे को, या उस direction वाले बंदे को, तो she would have helped me to dress that way. Why it looks like so disheveled and messy and sloppy? So anyway, I knew that this deal is not going anywhere. So he called me the very next day and he said, oh, I have good news and bad news. Which one do you want to hear? I said, look, Mitch, good news and bad news is for you, not for me. So, just tell me. So कहता ये है कि good news ये है कि I will invest in this wardrobe. Bad news ये है कि I'm not going to do it right now. Because my wife told me, मैंने कहा तुम्हारी wife ने क्या कहा? तो मेरी wife ने कहा कि something, you're not president yet. And so that's why I'm not doing it. But, obviously wife who's going to fight with the wife. So I said, okay, God bless you. Good luck. अच्छा वो पूरा due diligence हुआ उसका. 4-5 महीने due diligence चला उसमें, interviews ये वो. In the end, he was not selected. अच्छा मुझे पता चला select नहीं हुआ तो I called somebody that I knew. There was secretary अपना वहाँ पे assistant थी. She knew minutes से meeting वगैरह की. So मैंने कहा Barbara, what happened to Mitch? She said, Ahmed, he was not selected. I said, no. I said, why he was not selected? And she said, you know why he was not selected? I said, why? He said, because he didn't have the polish. अच्छा आप imagine करें कि जो पे सैलरी पे स्केल बात करता हूँ, जो रिटायरिंग CEO था, he was making $650,000. और ये जो बंदा था VP, he was making $250,000. अच्छा उसके पास CEO के पास स्टॉक ऑप्शन ये वो perks goes into millions. Now there was a $400,000 difference. And this guy was vice president. He was, I think, early 40s. He had 25 years to go in his career. So multiply 25 times $400,000 on a stupid $5,000, $6,000 worth. I have seen it so many times. People shortchange themselves in their career. They're very bright, they're very talented, they really should be at the top, and something less. So I was talking to the CFO जो कह रहा था कि मैंने multinational में जाना है, तो मैंने कहा कि I know why they're not selecting, especially multinational company. So you don't look the part. So I put him in that, right combinations, right colors, right ties, right shirts, right suits, and one day he called me up. He says, I got a great job. So this happens. Now, look, I mean, we have spent so many years invested in our careers. I mean, for men especially, we don't see anything else. And nowadays, everything's 24/7. We Zoom and all this, we are always working. And why should we take a chance? Why should we take a chance? That's the question. So I would say that take it very seriously, especially if you're moving up the corporate ladder, if you have any aspiration.
Even if you want to make your own company, if you want to become your own sole practitioner, and you want to open up your own accounting firm or professional, believe it or not, people are going to come. Why should I invest with you if you don't look successful? And you know, the way we look at people, how successful they are, because they are benchmarks. I mean, look at president of G7. Why don't they look sloppy, messy, disheveled? Why don't they look? It's not because they have money. They even know it. It's the world is their audience. Can you imagine? They don't look right. Not every time they are in the media or they are, you know. So that proves it that, you know, we have to really, really take care of it, our, you know, appearance, and we should invest in this. So that's a position. एक मेरे एक एग्जांपल और मेरे ज़हन में आ रही है. एक CEO मेरे पास आए और when I looked at him, he didn't look like a CEO at all. I was very surprised. Big organization. तो अब मुझे पता नहीं लगा कि कैसे शुरू करूं, कैसे बात करूं इनसे. So all of a sudden, like, you know, I started thinking about this, and I said to him, I said, sir, आपके ख्याल में क्वेश्चन है प्लीज सर. Can you time? मैं कहा सर, सी लेवल बंदे को सी लेवल का बंदा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए. तो एकदम हंसने लगे. Start laughing. मैंने कहा सर को मैंने ऑफेंड तो नहीं कर दिया. कहने नहीं आपने ऑफेंड नहीं किया. एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा है कि लास्ट वीक मैं और मेरा एक मार्केटिंग असिस्टेंट, वो सारा सूटेड बूटेड था. मैं इसी तरह वो सिंपल था, सलवार कमीज और ये वो भी नॉट प्रॉपर्ली स्टिच, प्रॉपर्ली प्रेस्ड, ऑल दैट. कोई वेस्ट कोट नहीं है, कोट नहीं इसके ऊपर. एंड वी वेंट देयर एंड दे डिडंट नो मी, दे हैड नॉट सीन मी बिफोर. एंड उन्होंने उससे कहा कि यू नो आप आगे आइए. मुझे कहा जी आप पीछे जाके बैठ. यू नो हाउ मेनी टाइम्स इट हैपेंड? A lot of times. Why to compromise with this? Why to compromise with your Lord? आप स्मार्ट हैं, आप एजुकेटेड हैं, अल्लाह ने आपको ब्लेस किया हुआ है, और फिर मैंने आपको इस्लाम से शुरू किया है. बादशाह जो थे इस्लाम में, जो हज़रत सलमान थे, वो बादशाह थे, तो कैसे कपड़े पहनते? बादशाहों वाले कि फकीरों वाले? So there are a lot of reasons for it. It's not about, जैसे मैंने कहा, it's not about arrogance, it's not about showing off, it's not about, you know, I'm going to impress them with my clothing. अगर आप impress करने के लिए clothing पहनते हैं, तो I think again you will be very conscious. आपने clothing appropriate पहननी है, right colors हो, उसके बाद right fitting हो, आपकी personality पे suit करते हो, आपकी position के मुताबिक हो, और आपके profession के मुताबिक. And you could do that in very economically. I mean, आप सोचिए, मेरे पास लोग आते हैं, इतने महंगे कपड़े लेके आते हैं जी 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा है हमेशा. ध्यान से इनको मैं जब देखता हूँ, मैं तो कलर ही राइट नहीं आता. आपने इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर? अच्छा कलर राइट नहीं है, कौन सा कलर होना चाहिए? तो आपको इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर वार्डरोब ऑन ए बजट. उसके बाद लास्ट चीज जो है प्रोफेशन के, आपको जो आपका प्रोफेशन है वो आपको लगना चाहिए. अगर आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अकाउंटेंट लगने चाहिए, अगर फाइनेंशियल प्रोफेशनल है तो फाइनेंशियल प्रोफेशनल लगने चाहिए, अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर लगने चाहिए, जज हैं तो जज लगने चाहिए. Whatever your profession is, you must look the part. If you don't, let me tell you this again, it's gonna hurt. मैंने, you know, I spent 25 years in this, you know, with different professions and all this. मैं एक डॉक्टर की स्टोरी सुनाता हूँ आपको. I met a lady, American lady, about a few months ago. It's a social event there, and we started talking. And I said, ma'am, I said, how was your experience in Pakistan? And she said that, oh, I have good experience, I have bad experience. So मैंने कहा good experience को छोड़ो, bad experience था. So what happened? And she said, oh, by the way, I went to a bank, I wanted to open up an account. So when I entered the bank, at that time, excuse me, the phone was ringing. So at that time, you know, they thought because I'm a woman, so they said that, you know, they guided me to a woman banker. So when I went up to her, she said that, let me describe you. This woman was wearing very tight clothes. This woman was wearing all flowery clothes. She had huge makeup on. She had almost high heels. And when I looked at her, I said, no, she doesn't look like a banker. And I walked away.
And the manager stopped me and said, "Where you gone?" And I said, I said I didn't want to get into trouble. And then he sat me down and didn't open my account. The second bad experience I had, I went to a hospital and I had food poisoning. And again, I said I wanted to see a doctor. And again, happened to be a girl sitting there and again, same type of treatment. And I said, no, I want to talk to the doctor. I'm not going to get treatment from this lady. It hugely matters. Same thing is, you're a finance guy, you're professional finance, accounting, all that. You want to talk about their professional portfolio and all that, financial portfolio, if you don't look the part. अगर आप अपने बिजनेस में आप समझते हैं हाई नेटवर्थ बंदा आपके पास आए, आप हाई नेटवर्थ नहीं लगते. What gives? Why should you do business with you? This is, believe it or not, this works. अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं जो वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं, कभी उनको देखें, उनकी ड्रेसिंग देखें आप. They're the rainmakers, they bring money for, they take you IPO and all that. See how lavishly they're dressed. Retail banker of Pakistan, आप देख लीजिए, like people are wearing very, very lousy clothes. I cannot believe it. These are bankers. So you have to look the part. You have to look the part. If you don't look the part, I tell you something, you're gonna miss it. और society में भी आप देखिए, society में the moment you start dressing professionally, you go out, you go to the restaurant, you go to the train, you go to the plane. Every place you go, you get a preferential treatment because you look the part. People think like, hey, you are a man of status, a woman of substance, this, that, orbit, and they will give you a special treatment. मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि I traveled to New York back and forth, and I was on a flight. I went to Qatar, I think, to stop there. उसके बाद वो दोबारा check in करते हैं सब लोगों को. So we were 300 passengers standing on the line. We checked it again. Security reason, दोबारा check in करते हैं. I was the 50th person on the line, and when the check-in started, that woman, I think it was European woman or something, she called me. She said, "Come here." तो मैंने देखा वहाँ मुझे बुला रही. मैंने कहा नहीं, yeah. So I went up to her. I said, "Ma'am, you called me. I'm here." तो मुझे कहती है कि would you like to travel in first class? I said, sure, if it's complimentary. अगर upgrade करती है तो why not? कहती, that's why I called. So give me your boarding pass, and she took my boarding pass, and then she gave me a new boarding pass for first class, and she said, now you don't have to wait in the line, just go this way. I knew why she selected me, but I still wasn't sure. And I said, let me ask her. I said, ma'am, I said, may I know something? She said, why? I said, there are 350 passengers. Why did you select me? You know what she said to me? She said to me, I selected you because you look like a first class passenger. That's all it was. Now on that day, I can guarantee you, I wasn't wearing a suit, I wasn't wearing a tie, I wasn't wearing, pins and pocket squares and all that. एक कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, लिख लें इसको. अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास है, you can go any place and you will get that preferential treatment. Blue blazer jacket, blazer और coat, जो सूट कोट होता है उसमें फर्क ये होता है कि उसमें मेटल के बटन लगे होते हैं, जरा थोड़े से डेकोरेटिव बटन होते हैं. And that gray slacks, pants, white shirt, button down कर लें अच्छी, casual shirt की तरह, and then nice belt, nice shoes. If you have that, let me tell you this, you are in. Doesn't matter where you go. उसको आप ड्रेस अप करना है, टाई लगा लें, ड्रेस डाउन करना है. मैं ये क्लेम करता हूँ कि अगर आपके पास एक आउटफिट में आपने यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, फिर वहाँ से मिलान जाना है, फिर वहाँ से आपने पेरिस जाना है, वहाँ से फिर आपने लंदन जाना है, आपकी मीटिंग्स हैं, ये हुआ, एज लॉन्ग एज सूट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट, आप इस एक आउटफिट के साथ यू कैन गो एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, यू विल बी एक्सेप्टेड. You don't have to worry about this. So this is the biggest tip I can give you. और ये नेवी ब्लेजर, बाय द वे, ये नेवी ब्लेजर आपके लिए और बेशुमार काम भी करेगा. फॉर एग्जांपल, आप शलवार कमीज पहनते हो, व्हाइट अगर शलवार कमीज है, उसके बाद आपने डार्क नेवी का ब्लेजर पहना हुआ है, आई लुक्स फिनोमिनल. इसके साथ अगर आपने टोन ऑन टोन लुक में आना है, तो आपने इसके साथ नेवी लेस से नेवी शलवार कमीज कर ली, ऑलमोस्ट सिमिलर कलर, जिससे इमरान खान तक पहनी थी वेस्ट कोट के साथ when he went to see Trump. Guess what he was wearing on that day? He was wearing dark navy color की मैंने कॉन्ट्रिक्शन आपको बताई है. Power plus approachability. How could you go wrong?
तो ये ब्लेजर है। उसके बाद लेट्स से अगर आप बहुत कैजुअल में भी आना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू गो टू फैमिली डिनर और समथिंग लाइक दैट, यू वांट टू वेयर अ जैकेट, यू वेयर दैट नेवी जैकेट एंड यू वेयर विद जीन्स, देन यू वेयर विद chinos एंड यू स्टिल ड्रेस अप। यू कैन इवन, अगर थोड़ा सा और फैशनी होना चाहते हैं तो आप इवन टी शर्ट के साथ बड़ी नाइसली टी शर्ट का उसको डोन कर सकते हैं, आप पोलो शर्ट के साथ पहन सकते हैं। आई मीन दिस इज लाइक अ chameleon. You know, if you get the biggest tip from me, I'm giving you that. White shirt will work every place. जिस मीटिंग में आप जाएं, let me tell you, you should be wearing the white shirt. Why white shirt? White shirt means trust me. White shirt means credibility. White shirt means pure. White shirt means honesty. White shirt means so all the connotation. White shirt means sophisticated, refined, polished. और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट पसंदीदा कलर व्हाइट था, तो आपको भी गो रॉन्ग विद दैट। तो वो व्हाइट शर्ट आप अपने मेक इट अ स्टेपल आइटम। अच्छा, अब एक व्हाइट शर्ट नहीं होनी चाहिए, एक व्हाइट शर्ट है तो क्या होगा, एक मीटिंग अच्छी आ गई, वो व्हाइट शर्ट तो गंदी हो गई, 3-4 व्हाइट शर्ट आपको रखनी चाहिए एटलीस्ट। अगर उसमें कोई ड्रेसी है तो वो भी हो, कोई ड्रेसी इवेंट आ सकता है, यानी कोई जिसमें सेल्फ होता है, हम उसे टोन ऑन टोन कहते हैं, वो भी दैट्स वेरी वेरी गुड टेक्सचर। एंड पर प्लेन जो है ना वो प्रोफेशनल मीटिंग के लिए प्लेन शर्ट, प्लेन व्हाइट शर्ट। फॉर वुमेन ऑल्सो आप अपना चाप पहनती हैं या अपने लिबास पहनती हैं। I wish I could have shown you pictures. I couldn't get it managed here. I'm at right now PTV Islamabad. Islamabad से बात कर रहा हूँ आपके साथ। Thank you, at least they accommodated me here, but for some reason I couldn't show you all the pictures. लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को देखें, ये पिक्चर्स निकाल के देखें। Women के साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ, we have women in the crowd here. I mean, तो उनकी ड्रेसिंग देखें निकाल के, you will never find any print in it. इतनी सॉलिड है। दुपट्टा देख लें, वाइट सॉलिड कलर्स के हैं। हाँ, if you want to look feminine, you should look feminine, you are feminine, तो थोड़ी ट्रिमिंग कर लेते हैं, पाइपिंग कर लेते हैं, around the neckline, around the sleeves and all that. And इसके बाद एक और बड़ी accomplished woman है, again, I'm not talking about political, this is not political statements, these are from dressing point of view. तो वो देख लें, हिना रुबानी को देख लें, again, like, solid colors, and she represented Pakistan in style and I think with graces and all that. So that what I would say. आप प्लेन कपड़ों में आ जाओ, और I can prove it to you. आप दुनिया में जितनी सक्सेसफुल वुमन देख लें, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, या सक्सेसफुल बिजनेस रन करनी है, CEO है बड़ी कंपनी की, you will never find them in prints. पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? प्रिंट 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 प्रिंट। अच्छा, प्रिंट के इश्यूज क्या है? सबसे पहले प्रिंट का इशू ये है, आपकी एक सर्टन कलर स्किन टोन है, आपकी आई कलर है, हेयर कलर है, काफी बात की इसके ऊपर, तो उसमें तो 10-12 कलर चल रहे हैं, 15 कलर चल रहे हैं, तो कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है? इट्स लाइक अ मिशमैच, सो वी कैंट फिगर इट आउट। दूसरी बात है कि प्रिंट हर बंदी ने पहना हुआ है। अगर CEO है, टॉप मैनेजमेंट में है, उसने भी प्रिंट पहना हुआ है, मिडिल मैनेजमेंट प्रिंट, लोअर मैनेजमेंट प्रिंट, उससे नीचे भी प्रिंट। हाँ, घर में जाते हैं तो मेड ने भी वही, उसने भी प्रिंट पहना हुआ है, आई मीन सेम प्रिंट पहना हुआ है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? एक तो बहुत बिजी है, और दूसरी बात यह है कि एवरीबॉडी इज वेयरिंग दिस। तो आई थिंक सॉलिड कलर्स लुक्स वेरी नाइस, और सॉलिड कलर्स के साथ आप स्कार्फ के साथ खेलें। if you're women listening to me here, स्कार्फ जो है ना, यू कैन प्ले। जैसे हमारी एक्सेसरीज टाइज है, हमारी एक्सेसरीज पॉकेट्स पे रहे हैं, हमारी एक्सेसरी जो है मैन की, वो टाई पिन हो सकती है, कफलिंग हो सकते हैं। इस तरह वुमेन की जो एक्सेसरीज हैं वो दे आर ज्वेलरी। ज्वेलरी कैसी पहननी है? ज्वेलरी ऐसे पहननी है कि देखें आपकी पार्टी में नहीं जा रही। मैं अक्सर देखता हूँ, dumbfounded that how like what gives here। वो झुमके पहने बड़े लंबे, वो पार्टी किस्म की ज्वेलरी पहनी हुई है, पार्टी किस्म का मेकअप किया हुआ है। तो आपने ज्वेलरी पहननी है मिनिमल ज्वेलरी, जिसे कहते हैं मिनिमल ज्वेलरी। तो बिल्कुल जस्ट इट्स अ वेरी, I would say, discreet and it's very elegant, it's very sophisticated। टॉप्स लगाने जिससे कान के साथ लगे हैं, जैसे पर्ल के टॉप्स होते हैं। I mean, remember this, there is a attention and there is distraction. Women have already, shorter end of the stick because they don't get that equal opportunity as men do because of man's work. तो अब क्या होता है कि वो बेचारी बड़ी कोशिश करती है, एजुकेशन भी लेती है,
You know, she works so hard and she, you know, is very loyal worker in the company and all that. लेकिन जब promotion का वक्त आता है तो, you know, she pushed aside. I've seen this. America, you know, the biggest proven advocate of women rights. थोड़े से stats आपको बता दूं. आजकल के वक्त में, today in today's time, more than 50% graduates from Ivy League colleges are women. More than 50%, probably 60%. I guess sea level with between women from America, not even 30%. Now, वो भी 30% ये पिछले 5 साल में हुआ, उससे पहले 10%, 5% की चाहिए. Now, what are they missing? It's a man's work. They don't want them to come to the top level and all that for various reasons. तो इसमें आप compete कर रहे हो. आपने थोड़ी सी गलती की in terms of your attire. Low neckline पहन ली, tight कपड़े पहन लिए, flowery कपड़े पहन लिए, you know, even not. There's no way. There's no way. So there are against you already. I have 3 sisters. They're all professionals, and I understand this phenomena. I understand this phenomena. मैंने you know, in every company in America, it's like men and women. You know, I've worked there, so I know the challenges. तो आपने तो बिल्कुल अच्छा, उसके बाद आपने जूली जो है मिनिमल करनी है, मेकअप आपने मॉडरेट रखना है, उसके बाद आपने शूज जो है हाई हील्स में पहननी है. किसी पार्टी वार्टी के लिए रहने दें, जब आप कहीं शादी वादी पे जाती हैं पे, एक तो ये है कि आप हाई हील्स में ज़्यादा चल नहीं सकती. यू नो, इट्स वेरी हार्ड टू वॉक ऑल डे अराउंड. और फिर दूसरी है कि यू नो इट गेट्स डिस्ट्रैक्शन होती है. आपने अटेंशन लेनी है, डिस्ट्रैक्शन ही है. Attention gag, you look great, you look very nice, you look very professional, you look from top to bottom, everything is very, you know, harmonious. And I, you know, if I'm a client or if I'm your, you know, whoever I'm your, you know, stakeholder, whatever, I should look at you and say, you know something, I want to do business with this woman. She looks very professional. आपने बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं की. So that's what I have for women. And for men also, you know, if you're wearing a very loud tie, ties की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. Power ties जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट लेके हैं, power ties क्या होती है? 4 टाइप्स की टाइज हैं लिखने. पहली है सॉलिड कलर की टाइज, प्लेन कलर. I tell you something, the most, I would say, very easy to put together with any shirt and suit, and it looks absolutely stunning. एक पाकिस्तानी डिसेंट के मेयर हैं, मेयर सादक, लंदन में. I mean, I know he's a smart guy, but he's smart. He also looks very smart. If you ever see him wearing suits, he wears a solid color tie, and he looks absolutely great. तो solid color tie जो है, उसमें आप बहुत शौक कलर ना लें, ग्रे के शेड्स ले लें, ब्लू के शेड्स ले लें, इवन रेड की शेड्स ले लें, ऑरेंज मत लें, and it's very easy to combine. Second tie है जिसे कहते हैं texture tie, जिसे हम कहते हैं tone on tone. पाकिस्तान में self कहते हैं. I'm wearing one, you can't see it, but it's like a texture tie. I don't know if you can see it here. Yeah. Anyway, ये दूर से ऐसे लगती है solid tie है, लेकिन इसके अंदर texture है. So that's a great tie. Very sophisticated tie. अगर आप sophisticated लगना चाहते हैं, आप अगर सी लेवल के बंदे हैं, या सी लेवल के बंदे लगना चाहते हैं, तो वो 4-5 चीजें होनी चाहिए. You must look highly successful, you must look refined, you must look polished, you must look sophisticated, and you must look accomplished, and you must look arrived. अगर आप arrived नहीं है तो कौन arrived है? I mean, you paid the dues, you know, 20 some years, whatever. So you must look that. और वो sophistication और वो सारी कैसे आएगी? I mean, obviously we're not going to put a sign up here. I'm telling you, one of the tie, this is very, very sophisticated. Look, white shirt का आप पहने, जिसमें मैंने पहनी है, it looks highly, highly sophisticated. Texture ties. तीसरी tie जो है polka dot, POLK dot, polka dot. आप सर्च अप करें, आपको पिक्चर नजर आ जाए. I wish I could have shown you the picture. Polka dot tie is the most stylish tie you could wear and most professional tie you could wear, because you get both benefits there. Very British tie. You look absolutely British in it. And why I keep on saying British, because, you know, suiting and all this formal clothing is their domain. You know, they have defined it. I mean, it's not our product. So I think we have to kind of follow the, you know, the rules that they have set up. So anyway, polka dot tie.
And then the fourth tie is the rep tie. Rep ties होती हैं जो angular यहाँ पे चलती है, लाइनें हैं जो एंगल पे हैं, 45 एंगल पे. You have seen those ties. They are actually 100 years old pattern, and it's still today is popular, and still it works. Very decent tie, very different tie. ये 4 टाइप की टाइज जो आपने पहनी, इसके अलावा आपने कोई टाई नहीं पहनी, कोई स्टेटमेंट टाइप नहीं पहनी. कई लोग हैं, मैं पूछता हूँ आपने इतनी लाउड टाइप क्यों पहनी है सर, मैं एजुकेट. तो कहते यार मैं मेरी स्टेटमेंट आई है, दिस हाउ आई मेक स्टेटमेंट. मैंने कहा आप स्टेटमेंट अपनी यू नो अबाउट यू, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में, आप कंपनी के बारे में, आपके बारे में, व्हाई इट्स नॉट, व्हाई डोंट यू मेक स्टेटमेंट विद दैट, विद योर पर्सनैलिटी एंड विद योर पर्सोना एंड योर यू नो whole package. Why do you have to rely on a very loud tie to get attention? अक्सर ये होता है कि वो लाउड टाई पहनी हुई है तो कहेगा ये टाई इज वेरी नाइस. एक्चुअली वो पता क्या कह रहा है, टाई इज नाइस, यू आर नॉट नाइस. The best compliment you can get is somebody that says to you, you know, you look great, and you say thank you and you go on. तो टाई क्या है, तो आप जितनी स्टेटमेंट टाइज हैं, जिसमें फ्लावरली टाइज हैं, जिसमें पेजलीस हैं, जिसमें आपके एनिमल प्रिंट्स हैं, जिसमें आपके एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, आई सी सो मेनी पीपल वेयरिंग दैट. लेट मी टेल यू दिस, दे जस्ट फिल द आउटफिट. वो देखें, सूट जो है ना, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट दैट लुक दैट यू वांट टू give to whoever your audience is. It must be like that power look, and the power look doesn't come easily, but it's not that difficult to achieve that either. अब इसमें देखें पैसों की क्या बात है, एक टाई आपने खरीदी है, आपने एक फ्लावरली टाई खरीदी है, वही तो उससे भी पैसे दिए हैं. या आपने कोई एनिमल प्रिंट की टाई खरीदी है, उसके लिए आपने यू पेड फॉर इट. So actually it's not about the money, it's about how you select the items. So I would say if you have those ties, burn them. Statement ties, just use only power ties. If you don't have them, then look, tie में 2-3 चीजें और भी साथ आ सकती है. एक यह है कि टाई की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 3.5 इंच होनी चाहिए, 4 इंच होनी चाहिए, 3 इंच होनी चाहिए, 2.5 इंच होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. आप देख रहे हैं कई लोग जो पाकिस्तान पे टीवी वगैरह पे आते हैं, बेशुमार बड़े एक्सपर्ट गेस्ट होते हैं, टाई उन्होंने लगाई है 3.5 इंच की से 4 इंच की, बड़ी चौड़ी टाई, ऐसी लगती है बेब है. Sorry to say that. I mean, 15 years ago, 20 years ago, old time. अब बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की, बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट की, बात कर रहे हैं आपकी कंपनी जो है वो नई प्रोडक्ट्स हैं, यू नो, मेकिंग बिग इनोवेशन एंड ऑल दैट. लेकिन आप लगते हैं कि डायनासोर एज के. तो आपने वो सारी जितनी चौड़ी टाइज हैं, जस्ट गेट रिड ऑफ दैम. I know, I mean, everybody I talk to, they have some ties like that. किसी को गिफ्ट में मिली हैं, किसी ने खरीदी हैं. कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि 20 साल के बाद जब फैशन चेंज होगा तो देन आई विल वेयर देम अगेन. वेट, इट माइट बी अ लॉन्ग वेट. तो आजकल की टाइज में आपने जो है जो चल रही है वो 2.5 से 3.5 इंच की विड्थ है. एंड इफ यू आर देयर देन आई थिंक यू आर ओके. उससे ज्यादा अगर उससे पतली हो जाती है तो फिर इट लुक्स वेरी बॉयिश. It looks like जैसे वो रस्सी सी है, just like a rope or something like that. I think in your profession and the kind of work you do, it's not going to go for your type. अच्छा, दूसरा इसमें आपने विड्थ का एक और पैरामीटर भी है, वो ये है कि आपकी बॉडी कितनी बड़ी है. If you are a big chested guy, you're a huge guy, तो आपने थोड़ा सा साइज को बढ़ाना है, यानी कि आपने बहुत पतली टाई लगा दी, because then you will look very odd. एक और बात है लेपेल, जिसे यहाँ ये कॉलर होते हैं जिसके कोट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में लेपेल कहते हैं, एक्चुअली वर्ड इज लेपेल, एल. तो लेपेल जो है उसके साइज के मुताबिक भी टाइज की रिलेशनशिप है कि आपने जो टाई है वो आपने उसके साथ रिलेशनशिप लेनी है. अगर आपने थिन पहने हुए थिन टाई भी अच्छी लगेगी. अगर आपके बहुत बड़े लेपेल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल लुक अगेन फ्रॉम डायनासोर एज. आजकल आपका जो लेपेल साइज है, डिपेंडिंग ऑन योर, अगर आप you are anywhere between 36 chest to let's say 42 chest, तो 2.5 इंच से बड़ा लेपेल नहीं होना चाहिए. अब आप कहेंगे जी मेरे पास सूट पड़े हुए हैं, बहुत पुराने सूट, तो वो 3.5 इंच के हैं, 4 इंच के हैं. तो मैंने कहा यू लुक एंटीक्वेटेड, यू लुक ऑब्सोलीट. व्हाई डू यू वांट टू लुक ऑब्सोलीट? कपड़े कितने को महंगे हैं, आपने अपनी जर्नी में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अपनी एजुकेशन पे, अपने करियर पे, एंड बिलीव इट नॉट, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन देयर.
So get them really made, you know, go with the times and go see, you know, what the modern ways. तो आपने इस बात का ख्याल रखना, नॉट कैसी लगानी है टाइप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंगल नॉट लगानी है, डबल नॉट लगानी है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द कॉलर शेप, आपका कॉलर शेप क्या है। अगर आपका कॉलर स्प्रेड है तो देन ऑब्वियसली यू नीड अ डबल नॉट, और अगर आपका जो है वो मोर लाइक नैरो है, तो वाइट मीडियम स्प्रेड है, देन सिंगल नॉट वुड वर्क। ऑल्सो कॉलर शेप, इसका रिलेशनशिप आपके फेस शेप के साथ है, इट्स नॉट अबाउट फैशन। यू नो, आपका अगर फेस से लंबा है तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड जाना है टू बैलेंस योर फेस। अगर आप बहुत चौड़ा है आपका मुंह या बहुत ब्रॉड है, तो देन यू हैव टू गो लिटिल बिट नैरो हियर, यू डोंट गो ब्रॉड, यू गो ब्रॉड, देन यू लुक वेरी ब्रॉड हियर। So these are some of the tips that I give you. सूट के बटन, आप खड़े हैं तो कौन सा बटन बंद करना है? I mean, I see 80%, 70% of Pakistani men, they close both buttons. दोनों बटन बंद करते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला। That's a very big citation in fashion. Fashion police काम करती है citation। तो उसमें आपने ऊपर वाला बटन बंद करना है और नीचे वाला बटन आपने खुला छोड़ना है, या आप दोनों खुले छोड़। जब बैठना है तो आप अपने बटन खोल दें। मैंने देखा so many people on TV, I see that and they look so uncomfortable। वैसे भी आप देखें एक बात, अगर आपने दोनों बटन बंद किए हुए और बैठते हैं तो पता क्या होता है, सारी जैकेट और wrinkly and everything, क्योंकि सारी स्ट्रेस क्रिएट होती है, और जब बैठते हैं तो वो और आपकी जो पेट है वो एक्सपेंड करता है, वेस्ट एक्सपेंड करती है, एंड यू नो देन यू गेट ऑल द wrinkles and everything। I mean, you should feel comfortable and should look comfortable। तो ये है बटन का रूल कि आपने कौन सा बटन पहनना है। शूज और जो अपना सॉक्स और बेल्ट है, ये कैसे मैच करें? Let me take a sip of water। उसका रूल सुन लीजिए। अगर आपके ब्लैक शूज हैं तो आपने ब्लैक बेल्ट पहनना। It's amazing how many men I see this, black shoes and brown belt पहने। Why? Probably they don't know it। तो आपने उसके साथ एक मैच करना है। और आपकी जो सॉक्स हैं, सॉक्स और जो आपकी जो शूज हैं, या तो आप पैंट के साथ उसको मैच कर लें, पैंट के कलर के साथ डालकर चले जाएं, या फिर जो आपकी शू है उसके साथ मैच कर लें। सॉक्स जो हैं वो कौन सी पहने? आई वुड हाईली रिकमेंड प्लेन कलर्स की पहने, कोई और कलर ना पहने। यू नो, कोई डिजाइनर ना पहने, कोई इसके ऊपर मोटीफ है, कोई इसको डिजाइन है, लाउड काइंड ऑफ सॉक्स। दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो लाउड सॉक्स पहनता है एंड स्टिल लुक्स गुड एंड पीपल एक्सेप्ट हिम, वो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो। And this guy, you know, he wears he wears that you know very loud socks। लेकिन उसकी रीजन है, you know, he can carry it, you know why? वो बंदा इस किस्म का है, वो जब सिनेगाग में जाता है तो यहूदी बन जाता है, मुस्लिम मॉस्क में जाता है मुस्लिम बन जाता है। You know, if he goes to Sikh Gurdwara, he's like Sikh। If he goes to Hindu's temple, he becomes Hindu। So he has this very, you know, special, I would say, trait about him, and he looks very legitimate, he looks very real। You know, he empathizes with people, sympathizes with people, he looks like one of them। So he's like one of the kind। Other than that, आपने जो है वो ऐसी सॉक्स को ट्राई नहीं करना। तो इसके बाद एक और सॉक्स में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताऊंगा स्किन कहाँ से शो करनी है। आपने स्किन के सिर्फ दो ही रूल है। आपने सिर्फ स्किन जो आपकी वो टू प्लेसेस पे शो होनी चाहिए, एक है फेस और एक आपके हैंड। स्किन शुड नॉट शो, ना आपके बाद छाती ये चेस्ट के बाल नजर नहीं आने चाहिए, दो बटन खुले नहीं होने चाहिए आपकी। यू नो, अगर आपने शर्ट पहनी हुई है तो इसके साथ एक स्लीव का बटन लगा होता है वो लगाएं ताकि वो खुले नहीं हो, आपकी स्किन नजर ना आए। फिर आप जब बैठती हैं तो पेंट राइट करती है, तो इसका मतलब है कि आपकी लेग स्किन शो हो रही है। I have seen very important people, very people, high profile people, and even it's very disgusting। The most highly unprofessional thing you can do कि आप लेग क्रॉस करते हैं, आपकी सारी लेग लंबी 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 नजर आ रही है, वो नेकेड नजर आ रही है। So what's the solution? Solution is very easy। आप जब सॉक्स खरीदें, सॉक्स थोड़ी सी लंबी वाली सॉक्स खरीदें,
because you should know that events can arise. Probably lambdi south feeling what happened when you cross the legs, it still will be covered. And this rule is, I would say that definitely should be followed up. Shoes key polish. You are not going to believe it. Kitna mundane the point, a simple point that shoes must be polished. I mean, we've been hearing all our life, and still you look at people's shoes and you wonder what happened. So वो कहते हैं कि जस्टिफिकेशन बहुत है कि सर वो बाहर से आया हूँ, सर बाइक पे आता हूँ, बाहर धूल है, बाहर मिट्टी है, जी चल के भी थोड़ा आता हूँ, क्या है यार मैं कोई हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ रहा, आप क्या बातें कर रहे हैं। देखें कोई एक्सक्यूज नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते तो मैं ये कहता हूँ अच्छा भाई ऐसे करें 3 शाइनर्स ले लें, एक घर में रखें, एक अपनी ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी है, अगर कार में आते हैं कार में रख लें, अगर बाइक पे आते हैं तो यू हैव टूल्स एंड यू हैव अदर थिंग्स साथ रख लें, एक अपने ऑफिस में रख लें। क्या है जहाँ भी आप आए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जस्ट शाइन योर शूज। बाहर गए हैं आप डस्ट को तो नहीं रोक सकते ना। इसी बात पे लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बड़ी है, बाहर गर्मी बड़ी है, सर आप तो कहते हैं जैकेट पहनो, आप तो कहते हैं ब्लेजर पहनो, आप तो कहते हैं शूटिंग करो, आप कहते हैं ये, आपको पता है बाहर कितनी गर्मी है। This was the first question, by the way, I asked when I started doing training at CSS Academy. तो सारे they all end up to me and they said, हामिद साहब आप तो ठंडे मुल्कों से आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो आप ये सारा लेक्चर में दे रहे हैं प्रोफेशनल कोडिंग के ऊपर, हाउ कैन वी डू दिस। तो मैंने कहा, मैंने साथ कैसे के लिए कहा, मैंने कहा बात सुने, आपने धूप में खड़े होकर मीटिंग करनी, I mean, obviously you're not, ब्यूरोक्रेट हैं आप, यहाँ हैं आप, चिल्ड माहौल है, सारा रहता है, आप घर से आते हैं, आप होपफुली यू हैव एयर कंडीशन फैंस ऑल दैट, आप यहाँ CSS अकेडमी में आते हैं, ऑल अगेन चिल्ड, रियली नाइस कूल टेंपरेचर, कोई एक्सक्यूज, देयर इज नो एक्सक्यूज। ये तो ऐसी है, एक बंदा कहता है कि वे बाहर बारिश हो रही थी तो मैं आई कम सोक्ड एंड यू आर सोकिंग एंड यू गो इनटू द मीटिंग, आई हैव टू टेल यू टू अप्लाई इट। तो कहेंगे यार आपने वेदर क्यों नहीं देखा, आपके पास छतरी क्यों नहीं है, आप उनको आर्टिकल क्यों नहीं है कवर्ड, I mean, how dare you come to the meeting and you look like this। Let me tell you this, there's no excuse। I mean, if somebody does that, I think they cut into their own status and credibility and all that। तो इसमें शूज के बारे में मैंने बताया, बेल्ट मैंने बता दी है। अच्छा बेल्ट जो है सूट के साथ कौन सी बेल्ट है, a lot of mistakes, I mean I see 80% of the people don't know this, very small thing mundane thing। आपने ड्रेस बेल्ट पहनी, आपने कैजुअल बेल्ट। अच्छा ड्रेस बेल्ट क्या होती है, ड्रेस बेल्ट उसका जो बकल है वो बड़ा स्लीक सा होता है, बड़ा शॉर्ट सा होता है, इट्स नॉट बिग बकल एंड इट्स नॉट लाइक इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है जैसे गुची मुची दैट Ralph Lauren, वो भी जाली फेक 150 रुपए की। I mean, no, don't do that. It's going to cut into your personality. It's going to cut into your credibility. It's going to cut into your presence. It's going to cut into your status and stature. Don't do that. तो वो अच्छा जो बेल्ट है उसकी वो होनी चाहिए 1¼ इंच वाइड, उसके ऊपर हैवी स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हैवी स्टिचिंग होगी तो देन लेट मी टेल यू दिस व्हाट दैट्स द कैजुअल दैट। कैजुअल वेयर की अपनी प्लेस है ना, जब कैजुअल कपड़े पहने तो कैजुअल वेयर पहने, तो दैट्स अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू दिस। हाइजीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई नो इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, आई हैव सीन careers ruined because of it, because nobody told them that hygiene is so important। बड़ा मंडेन तौर पर इस्लामी तो इस्लाह के आप नमाज पढ़ने जाएं तो आप अपना ब्रश करके जाएं, आपने लहसुन खाया है तो आप नमाज पढ़ने ना जाएं, डोंट किल पीपल विद दैट स्मेल एंड एवरीथिंग। और निस्फ हमारा ईमान जो है वो सफाई में रखा है, पवित्रता में रखा है। दिस इज आवर पर्सनल ट्रेनिंग, बट गेस व्हाट्स हैपेंड, वी हैव फॉरगॉटन दैट। तो क्या होता ये है कि अगर आप जो है जैसे गर्मी है, especially with men, they are the biggest wild through that। शर्ट पहनी है तो जो आर्मपिट में सारा पसीना नजर आ रहा है। How do you look professional with this? For God's sake, it's not gonna work for you। It's not, it's beneath your status। आप तो professional हैं, आप तो educated हैं। What excuse can you give? You walk into a meeting,
You take your jacket off, you do a presentation, and then you see a big wet spot. Guess what? People are blind. People are blind. They're looking at it. Easy solution बता दूंगा आपको. आप अंडर शर्ट लें, बाजू वाली अंडर शर्ट. It will do miracles. You know, आप अंडर शर्ट लें, वो पहनें. It will absorb जितनी perspiration है उसको absorb करें. So that's the easy 200 rupees solution. आज के बाद कभी भी आपने शर्ट बगैर अंडर शर्ट के नहीं लें. इसका दूसरा फायदा मैं आपको और बता दूं. Your shirt will last longer. क्योंकि जब पसीना आता है, पसीने के अंदर सारा केमिकल होता है, that kills the fabric. तो आप हमेशा कहते हैं यार शर्ट्स जो है ना यार मुझे वो I mean like I have to get new shirts this. So why to ruin the shirts? You're not going to believe it. I have some shirts that I've been wearing for last 6-7 years. एक तो रोटेशन में रखें शर्ट्स को, इस सेम शर्ट को रगड़ेंगे ना, वही बार बार पहन रहे हैं, तो आप इसकी it's gonna get worn out. फिर आपकी जो oral hygiene है, oral hygiene is extremely important. If people cannot come closer to you and talk to you, why would they want you to grow in their company? Why would they promote you? Why would they send you to important conferences? Why would they send you to important meetings? Why would they send you to important clients? They will not. दूर हो जाते हैं लोग. जब आपसे दूर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है. So I think that oral hygiene is extremely important. फिर इसके बाद है body odor. Look, I mean, yes, it is true that, sweaty space is, humid, these are how the cards are cut. हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ठंडा मुल्क बन जाए. I mean, no, it's not going to be, unless climate change करते हैं. I mean, things are happening right now. But so far, that's how the cards are cut. इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो स्वेट भी करेगी, आपकी odor भी इसमें निकलेगा. तो उसका इजी सोल्यूशन क्या है? आप डिओड्रेंट यूज करें. अगर आपने आज तक अच्छे डिओड्रेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, आई थिंक यू आर मिसिंग अ बिग थिंग. अच्छा ब्रांडेड डिओड्रेंट है जो 24 आवर्स लास्ट करे, मैन वुमन दोनों. सुबह जब तैयार हो तो डिओड्रेंट यूज करें. उसके बाद आ जाता है परफ्यूम. परफ्यूम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? तो मैं कहता हूँ लगाना चाहिए, लेकिन नहाना ही चाहिए उसके अंदर. Don't put it so much perfume that you kill people with that. I see sometimes like, oh my God, like so strong, so much. परफ्यूम लगाने का तरीका क्या है? पाकिस्तान में 70-80% लोगों को परफ्यूम ठीक से लगाना नहीं आता. वो क्या करते हैं कि वो लेट्स से दिस इज परफ्यूम बॉटल, ये परफ्यूम की बॉटल है, and they go stand for it, they go सारा अपने कपड़ों में लगाते हैं. That's the wrong way to do it. क्योंकि एक्चुअली सारा कपड़ों में लगता है, एंड कपड़ों में जाके वो अपने नजर स्मेल क्रिएट करेगा. वो आपकी स्मेल के साथ स्मेल मिलके बिलीव इन इट्स नॉट गोना बी गुड स्मेल. तो आपने क्या करना है कि जो राइट तरीका है कि परफ्यूम की बॉटल पकड़े. ये परफ्यूम की बॉटल है, ये आपकी फेस्ट है, इस पे दो आप स्पेस यहाँ करें, एंड देन यू गो अंडर द नेक एंड दैट्स इट, you're done. Maybe you're not done for the whole day. तो उसके लिए आपके पास ग्रूमिंग किट होनी चाहिए. ग्रूमिंग किट क्या है? आपके पास बेसिक चीजें होनी चाहिए. आपके पास टूथब्रश, आपके पास टूथपेस्ट छोटी स्मॉल, आप इसे छोटा सा बैग रखें, अपने ऑफिस में लें, साथ लेके जाएं, या रख दें वहाँ ऑफिस में. After the meetings you can fresh up, go there privately, you can do whatever you want. आप अपना माउथ वॉश कर सकते हैं, माउथ वॉश रख लें, मिंट रख लें. No excuse, let me tell you, no excuse. ये नहीं कह सकते कि यार, but it happens, when we talk a lot, हमारा मुंह ड्राई हो जाता है, और ड्राइनेस के साथ वो ऑर्डर क्रिएट होता है. इट्स नेचुरल प्रोसेस. तो आपने प्रेजेंटेशन किए, 1 किए, 2 किए, 3 किए हैं, 4 क्लाइंट्स से मिले हैं, व्हाटएवर, वैसे ही आप सारा दिन मुंह नहीं खोला, समटाइम्स दैट आल्सो गिव्स ऑर्डर. तो उसमें सारी चीजें आपके पास छोटी सी व्हाटएवर आपका छोटा ग्रूमिंग किट बैग हो, जिसमें आपके पास आपकी कॉम, आपकी हेयर स्प्रे, आपकी एनीथिंग कुड हैपन. मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, अगर आपके पास ऑफिस है, एक अच्छी वाइट शर्ट वहाँ भी आप हैंग कर दो.
अच्छा कोट वहाँ से हैंग करके रखें. Anything that happens, you go outside, maybe you drink coffee, tea, something spills on you, you have a very important meeting. What are you gonna do? You can't go home. You cannot go buy a new shirt. Meeting is just an hour away. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. तो हाइजीन के ऊपर मैंने आपको ये बताया कि anybody that I've seen in this, international phenomenon, I mean, anybody with that problem, companies did not remove it. But they will never tell anything to them. It's another thing. मेरी HR वाले लोगों से बात होती है कंपनी में, कहा मैम HR की लेडी है, मैंने कहा if you tell somebody that he smells bad, let him go. I think tell somebody that he looks very sloppy, let him go. तो फिर HR वालों ने क्या करना? So you are on your own. Make sure that you do the right thing. Last बात मैं आपको ये करूँगा, and then we'll take some questions. वो ये है कि अब क्लोथिंग को देखना कैसे हम. एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड कैप्सूल वार्डरोब. कैप्सूल वार्डरोब का मतलब ये है कि आपके पास हर आइटम जो आपके वार्डरोब में है, इट्स वेरी वेरी वेल थॉट आउट. अगर आपको 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग की बात करेंगे या उसको आप समझ के उसके मुताबिक आप क्लोथिंग करेंगे, लेट मी टेल यू दिस, यू विल हैव अ कैप्सूल वार्डरोब. यू डोंट हैव टू बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स बिकॉज़ एवरीथिंग विल गो विद एवरीथिंग. कलर राइट है, फिट राइट है, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, फिर आपकी पोजीशन के मुताबिक है, फिर आपकी प्रोफेशन के मुताबिक. इसका मतलब आप कोई शर्ट ले लें, कोई पैंट ले लें, कोई टाई ले लें, कोई सूट ले लें, बिलीव इन इट्स नॉट वर्क. टॉस सैलड अप्रोच होती है. टॉस सैलड में चिकन डाल दें. सैलड को डेकोरेट कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं एकदम से टॉस सैलड कहते हैं. एंड हियर यू गो. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू, कि आपने से कैप्सूल वार्डरोब. कैप्सूल वार्डरोब बनता कैसे है? वो इस तरह बनता है कि आपने जो आइटम्स हैं वहाँ पे, वो बड़ी सोच समझ के आपने उनको जो है वो सारी आपने यू विल हैव टू व्हेन यू बाइंग. एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से टू यू इज दिस, कि आप क्लोथ को क्या समझते हो? आप समझते हैं कि एक्सपेंस है, आप एक्सपेंस को अच्छी तरह वाकफ हैं, आप एक्सपेंस है, या आप इसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं? अगर आप एक्सपेंस समझते हैं तो लेट्स मी टेल यू दिस, देयर इज नो वे आई कैन कन्विंस यू. फिर आपने पता क्या करना है, आपने चीपेस्ट चीज लेनी है. आपने यू विल बाय क्वांटिटी, यू विल नॉट बाय क्वालिटी, और आपने यू नॉट गोना गो इन दैट डायरेक्शन. और आपने इसमें कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं होगा. ओके मैंने खरीद ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद लिया. ये एक्सपेंस. और एक्सपेंस का हमेशा ये होता है कि एक्सपेंस को कम कैसे करना है. तो एक्सपेंस को कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आप कोई डील ले लें, आप किसी सदर बाजार में चले जाएं, मार्केट में चले जाएं, वहाँ से आप चीप चीज़ें खरीद लें. Believe in it, it's not gonna work for you. I can assure you it's not gonna work for you. Actually, जो चीपेस्ट चीज़ें हैं वही सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है. आप तो अकाउंटिंग के बंदे हैं, फाइनेंस के बंदे हैं, लेट मी टेल यू, it's not what you pay for the garment. That's not the price. The price is that how much you paid and how many times you worn it, cost per wearing forward. अगर आपने एक शर्ट 500 रुपये की खरीदी, एक बार पहनी, कॉलर में बबल आ गए, बक्कल आ गए, श्रिंक कर गई, इट लुक्स लाइक टेरेबल, तो आपने 500 रुपीज दिए वन वेयरिंग. इसके बाद आप अगर पहन रहे हैं तो आप तो यू आर पुशिंग इट, एक्चुअली शर्ट इज शॉर्ट. इस तरह आपने 5 शर्टों में जाए 5 पैसे की एक शर्ट ले ली 2500 and got it made to the size and everything, and somebody really knows कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, उसके मुताबिक कैसी फिटिंग होनी चाहिए. I happen to be one of those. You can come to me for that. By the way, I have a showroom in Karachi, so if you want to visit me, you're most welcome. तो वो जो है आपने जो है उसको इन्वेस्टमेंट समझें. जब इन्वेस्टमेंट समझेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा. जैसे अगर आप हाउस खरीदने जाते हैं, प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट समझते हैं. तो आप क्या करते हैं, यार यहाँ पानी है, यहाँ बिजली है, या स्कूलिंग है, यहाँ पे एक्सेस है, रोड्स हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट. And it behooves me, when professional men, they go buy their clothes, they think like it's a utility item. जैसे disposable item है कि आज पहननी है तो वो फेंक दें. That's the most effective way to buy a wardrobe. तो मैं कहूँगा कि आपने paradigm shift की तरफ आए. This is a paradigm shift. From today on, you're going to look at each garment you buy, or article of garment you buy, or article of accessory you buy, and you're going to run it by that 5 P's of dressing. कि यार टाई खरीद रहा हूँ, ये टाई वो लग रही है,
क्या ये शर्ट खरीदा हूँ, ये शर्ट वो मुझे सूट करती है? तो आपने जब वो 5 पीस उस पर अप्लाई करेंगे, बिलीव इन आवर थिंग्स विल स्टार्ट क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगे कि आपने क्या करना। और लास्ट बात जो मैं आपसे करूँगा वो ये है कि सिग्नेचर लुक की तरफ। ये नहीं है कि एक दिन बहुत अच्छे लगे, एक दिन समवट अच्छे लगे, एक दिन बंदा कहता है यार क्या आप वही नहीं। आप याद रखें आपने ब्रांड है, आप कमोडिटी नहीं है। एटलीस्ट यू शुड थिंक यू आर अ ब्रांड। तो ब्रांड तो कंसिस्टेंट लगता है। ब्रांड ये तो नहीं है कि एक दिन ब्रांड है उसका लोगो कुछ और हो गया, कलर एम मैकडोनल्ड है, इमेजिन एक दिन फैट हो गया, एक दिन फ्लैट हो गया, एक दिन शॉर्ट हो गया, एक दिन स्मॉल हो गया, कलर चेंज हो गया। कंसिस्टेंट फूड कंसिस्टेंट है। तो इसी तरह आप अपने जो पर्सनल ब्रांड है, यू मस्ट लुक कंसिस्टेंट। अब दैट डजंट मीन दैट यू कैन वेयर द सेम आउटफिट। देखिए वो जो कलर स्कीम मैंने आपको बताई है, जो मैंने बेशुमार कलर आपको बताए हैं, इफ यू रिमेन इन दैट एंड यू अगेन follow up on those 5 P's and consider that while you're buying, it will give you that look, signature look. तो आपकी signature look होनी चाहिए। लास्ट बात जो मैं ये कहूँगा वो ये है कि every morning when you get ready, think about who you're going to be seeing. किसको मिलना है, क्यों मिलना है। फिर ये सोचिए कि मुझे कैसा इमेज प्रोजेक्ट करना है अपना। वो जिस बंदा से मिलने जा रहे हैं, जिस पार्टी से मिलने जा रहे हैं, वो मुझे कैसे परसीव करना चाहते हैं, आप कैसे परसीव करना होना चाहते हैं। तो आप उस इमेज को माइंड में रखिए। ड्रेसअप होके बाहर आए और अपनी स्पाउस से मत पूछेंगे हाउ डू आई लुक। शी इज ऑलवेज से हनी यू लुक ग्रेट। I mean, honey might look like hell. By the way, both sides work the same way. दोस्त से भी नहीं पूछना, वो भी obviously his friend, how could you friend you? आपने मिरर से पूछना, मिरर रखें, लंबा मिरर जो है आप देखें, look at yourself and then say to yourself, do I look credible, do I look trustworthy, do I look highly successful, do I look accomplished, do I look sophisticated, do I look refined? I mean, all those. And I tell you that mirror will never lie. Mirror will never lie. And so let's say, for example, you're getting ready in the morning, you put an outfit on, and you're aware of it, who you're going to be seeing, आपका stakeholder उसमें कौन है, most important, कई लोग कहते हैं कि मेरी 10 मीटिंग है, मैं कहता है most important meeting के बारे में उसमें dress up करना। That's the way to do it. They try to catch me, किसी तरीके से मैं उन्हें कहता हूँ नहीं आप क्यों मत कर लें। No, this not how it works. You're very smart people. God bless you, and you can apply that smartness towards your clothing. And I can assure you, will pay you off. आप तो फाइनेंस के बंदे हैं ना, ROI। तो आप भी ROI की आपको ROI अपनी तरह कैसे मिलेगी? आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो ROI कहाँ से आएगी? क्या मैं आपसे ROI ले सकता हूँ कि जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप मुझे ROI दें? तो आप कहेंगे भाई साहब इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास? तो आप भी इन्वेस्टमेंट करें। आज के बाद अपने कपड़ों को, अपने शूज का मैंने वो एक बताना भूल गया आपको, ऑक्सफोर्ड शूज, those are the only shoes lace up Oxford shoes, आप इसको गूगल अप कर लें। That's the only shape you should wear with suit, जिसे टू पीस सूट कहते हैं, फॉर्मल सूट। आपने कैजुअल शूज नहीं पहने, आपने लोफर्स नहीं पहने, आपने सिमिटेशन टाइप के शूज नहीं पहने, आगे आपने वो बहुत पॉइंटी शूज नहीं पहने, आपने कोई फैशन शूज नहीं पहने, आपने कोई क्लिप ऑन नहीं पहने, आपने बहुत बड़ी कोई डेकोरेशन के ऊपर नहीं पहने। You know why? Because that's a distraction. That's a distraction. You are a very competent person. You are, Pipwa is a wonderful organization, a great setup, and you have got the education, everything. This you show in your wardrobe, and I think we'll show that. And so you have to look at yourself every day. ये नहीं कि एक दिन है। कई लोग कहते हैं कि मूड नहीं था, क्या हुआ यार, आज क्या हुआ, आज मूड नहीं था। और ये मूड आपका तो करियर है, मूड का कैसे पता चलता है? You have to look very best every day. और लास्ट ये है कि अब ये सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा वो अपनी थोड़ी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट समझ लीजिए। 3-4 जगहों पे जा सकते हैं आप ये सारी चीजें सुन के 5 पीस को। तो अगर आप ब्रांड पे बात करेंगे तो ब्रांड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो तो चीजें वहाँ रखी हुई बेच रहा है। आई मीन आई एम श्योर यू वेयर ब्रांड। आज तक कभी किसी ब्रांड के शेयर मैंने आपसे पूछा था आप करते क्या है, इससे पहले तो आप सजेस्ट करें। Absolutely not. I've asked these people, thousands of people, and nobody understands कि ये मैं वहाँ
वहाँ गया, उसने तो मुझे कहा कि नहीं पहले अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने गाइडर के बारे में बताएं, आप कौन है, कहाँ है, विजन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करूँगा। The moment you walk in, you're looking at something and they say, oh, sir, तो बनी आपकी। And if you try to walk away, then सर लास्ट कलर रह गया। इसलिए एक्चुअली इन बेचारों की मजबूरी है, you know, they are not educated, most of them, so you know, I'm not trying to put them down। मैट्रिक फेल है, BA फेल है, फिर फेल है, वाइट कॉलर जॉब ले ली, ना बच्चों को ट्रेन करता है, ना बच्चों को कुछ पता है। So it's like, you know, I mean, just pushing just whatever the product they have. So that's one option you can do, but I don't think that you're gonna, or फिर ले भी लेंगे तो ready made है, I believe in you're gonna be making some compromises। आप मुझे कोई ready made garment पहन के आके दिखा दें, I will tell you 10 different things wrong with it, शायद आपको पता भी ना हो, but they are visibly wrong। और पेशवा चीज को आपको पता होगा, कॉलर फिट हो रहा है, स्लीव बहुत लंबी है, ये बहुत शॉर्ट है, या यहाँ पे बेस पे बहुत टाइट है, ये बहुत खुला है, you know, it's like फैब्रिक स्विमिंग देयर, सारा दिन आप टक इन करते रहते हैं, ऐसे पकड़ के शर्ट को। हाउ प्रोफेशनल वन शुड लुक, आई मीन लुक, अगर वो सारा दिन अपने आप को टच करके अपने कपड़े ठीक कर रहा है, तो आई थिंक इट्स नॉट। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि आप डिजाइनर के पास चले जाएं, आपने कहा यार हमें सामने जितनी चीजें बताएंगे, डिजाइनर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड देन दे डोंट हैव ओरिएंटेशन फॉर प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनल बंदों को ड्रेस करने की ओरिएंटेशन नहीं है, वो तो पार्टी वगैरह के लिए बड़ा आपको यूनिक बनाना चाहते हैं। You don't want to look unique, you want to look like a brand, consistent brand, so it's expensive। और तीसरा यह है कि आप किसी टेलर के पास चले जाएं, आपके अच्छा यार हम सब ने कहा था कि वो कपड़ा अच्छा लेके, पहली बात है कपड़ा कौन डिसाइड करेगा, स्टाइलिंग कौन डिसाइड करेगा। आप जो टेलर के पास जाते हैं तो टेलर तो मुझे ये कहता है सर बताइए कॉलर की शेप बताएं, कफ की शेप बताएं, जहाँ से कितनी लेंथ कितनी क्या। So what he is doing is asking you, and you don't know much, and he doesn't know much. And with all due respect to the tailors, they don't have aesthetic sense. So it's like blind leading the blind, and then the end result is, you know what the end result is. It's a disaster। फिर एक बार अच्छी चीज बन भी गई, दूसरी बार अब जाते हैं तो कहते हैं दूसरी बार उसने खुली कर दी, उसने तंग कर दी, उसने कॉलम, you know, forget about that, सही बुकरम ही नहीं लगाया, उसके अंदर सारे बबल हो गए, तो आप कितनी बार जाएंगे उसके पास। ये आपका जो this is your I would say wardrobe, it's not wardrobe, it's arsenal of weapons। But if you get it wrong, let me tell you this, you're going to pay a huge price in the end anyway। So एक और option, the final option आपके पास है कि आप किसी image consultant के पास चले जाएं। I mean, there are many out there, not that many in Pakistan। I mean, I'm enjoying them right now here। I don't know how long, but you can come to me। And I have a showroom in Karachi, and I can give out the number if you want to jot it down, 0322 Tetra 3034, 0322 3333 Hamid Saeed मेरा नाम है। You can reach out to me and we can meet and I can help you। I really want to help you। I want you to transform। That doesn't mean you have to do the entire wardrobe in one shot। You can start the link। So if you do that, you know, I'll be very pleased to welcome you। Having said that, I think we should take some questions। And thank you very much। Thank you, Ahmed sir. Thank you, Ahmed sir, for very knowledgeable session। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो हम उसको अलाउ करेंगे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी सईद अहमद लाखो, you can ask question। जी सही साहब। Yes, Assalamu alaikum sir। वालेकुम सलाम। It was really nice to hear you। मुझे खुशी हुई बड़ी, पहली दफ़ा ऐसा कोई सेशन मैंने अटेंड किया है और शायद टाइम भी है, नीड भी है मेरी इसकी। मुझे इसमें एक चीज़ मुझे दिक्कत कर रही है कि कुछ सेशन का जो पार्ट था वो मैं नहीं अटेंड कर सका, हो सकता है आपने उसको कवर किया हो।
ये क्यों है कि ज्यादातर जो अकाउंटेंट्स होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की पोजीशन के लिए मिसफिट होते हैं मोस्टली. Means 90% of the chartered accountants or professional accountants cannot be deputed as a MD or a CEO of the company. Despite having the knowledge of business, they are core member of the committee of the business who runs the business. Without them, no business is going to be successful. Absolutely. Although they cannot be in a leading position. Can you please highlight on it? You know, और इसमें जी बात कर लीजिए. इसमें एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए. हम अपने पास जो होते हैं हमारी जो ग्रूमिंग होती है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, यकीनन आपको उसका इदराक होगा. उस चर्च में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी अकाउंटेंट को मैनेजमेंट ये परसू करती है कि इसमें वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो एमडी या सीईओ ऑफ द कंपनी कैन बी देयर, तो उस न्यू पोजीशन पे जाने के लिए उस अकाउंटेंट को वो कौन सी चीजें अपनानी चाहिए ताकि वो फेल्यूर की तरफ ना जाए. जी मैम. Thank you. Thank you for the question. First of all, thank you for your kind words about my presentation. जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अकाउंटेंट why they don't look the part and why they C level के ऊपर में काफी they're facing a lot of challenging situation there. उसकी वजह awareness नहीं, knowledge नहीं, it's like a learned knowledge. और ये जो एक phenomena है कि skill set is the most important thing and I just have to only pay attention to the skill set and all that. मैं competent accountant हूँ. I get the job done, I get the profitability high, return on investment, all those other things. And, they don't pay much attention to how they look. तो मैं इसमें कहूँगा कि इसमें सिर्फ एजुकेशन का स्थान है. आपने ग्रूमिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इसके ऊपर काफ़ी आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्टली आपको बता दूँ. घर से ग्रूमिंग नहीं हुई, फ्रेंड से ग्रूमिंग नहीं हुई, ब्रांड से ग्रूमिंग नहीं हुई, सोसाइटी से ग्रूमिंग नहीं हुई. तो ग्रूमिंग कहाँ से? I mean, it's not going to happen in vacuum. तो इट्स लाइक रीचिंग आउट. लेकिन याद रखिए एक बात है, जो बंदा देखता है ना किसी को भी, यार इतना काबिल बंदा है, ऑल दैट एंड ही लुक्स लाइक ही डजंट लुक द पार्ट, तो वो ये भी सोचता है कि इतना स्मार्ट है तो इसे ये नहीं पता कि इंटरनेट पे जा सकता है, एजुकेशन ले सकता है, किसी से पूछ सकता है, कैन ही गेट द गाइडेंस, व्हाई इज ही नॉट गेटिंग द गाइडेंस. सो आई थिंक दैट वर्क्स अगेंस्ट हिम. So I would say that I think awareness of this is very common, the first thing, and that's why I'm going. In Pakistan, I'm going from Karachi to Peshawar. I'm using every platform, and I'm getting this message out that please do not kill your career. You have worked so hard for it, and you paid so dearly for it, and just for a lousy few $1,000s, few thousand rupees, or whatever, it's not cost you $1 million for your wardrobe. So आप अपनी पूरी चीज जो है वो you're putting it on stake. So I think that's what it is. दूसरी आपने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो उनके लिए क्यों नहीं बताती है ये या हराम को दे. देखिए सारी सही ट्रेनिंग जो है वो सारा फोकस है स्किल सेट के ऊपर. ACCA ने मुझे अभी रिटेन किया है एंड उनका जो 6 सिग्मा जिस तरह का प्रोग्राम है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट. उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो 1.5 लाख का बंदा है, he should get that kind of salary, वो आज 30,000 40 का क्यों बना रहा है. उसमें उन्होंने वो सारे की पॉइंट्स जो व्हाट इज मिसिंग, उसमें टेक्निकल भी हैं, उसमें प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन ड्रेसिंग का ह्यूज पार्ट है. So they're bringing me in there to talk to those people, and I have done one session already with a large group of people, and I think I'm going to be doing more sessions. फिर उसके बाद उन्होंने एक और सेगमेंट है जिसमें वो सोचते हैं कि ये 2.5 लाख से 5 लाख का बनता है. I mean, that should be his compensation salary. And why is getting only 150 or 175 or 100,000? So उसमें उन्होंने फिर again identify किया कि उसके क्या challenges and all that. And again, dressing is a huge part, and they're bringing me in, and I'm talking to them, and I'm creating that awareness. Not only awareness, I'm exactly telling them what to do. एक होता है ना कि आप एक superficial की बात करें कि अच्छा लगना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. What does it mean? It means nothing. So I spell it out and I say, so आप अकाउंटेंट हैं, आपको ये लगना है, आपकी स्कूल में मैसेज क्या है. जैसे मैंने ट्रस्ट पे बात की है, ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल, आपके सारे कपड़े, आपकी टाई, आपकी शर्ट, आपका if you're a woman, आपका हिजाब, आपकी ड्रेस, it should convey that you are a person that you trusted and credible. और उसके बाद आपकी स्पेसिफिकेशन है. तो उसमें जो है ना वो
they are not investing in it. You know, they're not. I'm going out there. I'm going to the companies and I'm saying to the HR people, I'm saying, look, you know, invite me, bring me in. You know, क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि ना तो सी लेवल का बंदा बात कर सकता है कि वो ना HR का बंदा बात कर सकता है. Believe it or not, they're gonna be slaughtered if they say it. But I'm a consultant. I can say whatever the heck I want. Whether they buy my argument or not, it doesn't matter. But I will call a spade, and I say, okay, you know, this how to do. So इसमें ये issues हैं, and you know, they send them for different types of trainings. They send them for technical training. They send them for different things. But when it comes to grooming, when it comes to which they didn't get it, and it's not their fault. You know, I empathize with them. I sympathize with them. I want to help them out. But you know, this is not the culture in Pakistan. And I'm a one-man army. I'm trying to change the culture, and wish me best of luck. And if you want to invite me to your company or wherever you are, if you have some friends in different companies, I'm available. You know, this is my passion. This is my love. This is my life. This is why I've come to Pakistan. I wanna contribute, so I can help. Yes, Hassan Saab. Okay. हसन आप माइक खोल लेना पहले. हाँ, अब बात कीजिए. आपका माइक ओपन करें जी. Assalamualaikum. I am Mohammad Hassan Ahmed. I am from Hamdard University, and I've just attempted the papers of MBA final. I have one question. The question relates to the attire of some people who are more inclined towards religion, and they prefer to wear shalwar kameez. So how would you suggest to them to improve their attire and to augment their dressing? Thank you. लेकिन शलवार कमीज पे मैंने पहले बात की है कि लेकिन शलवार कमीज को कौमी लिबास समझा जा रहा है, लेकिन पहना कैसे जा रहा है? पहना ऐसे जा रहा है इससे स्लीपिंग सूट बना दिया. तो अगर आप शलवार कमीज वाले बंदे हैं तो आई विल नेवर से कि आप शूटिंग में चले जाएं. रिलीजियस है, ठीक है, वो रिलीजियस रीजन से पहन रहे हैं या वैसे कंफर्ट की वजह से पहन रहे हैं, तो बाय ऑल मींस पहने, लेकिन उसे सही तरीके से पहने. सबसे पहली बात है कि स्टिचिंग क्या है. अगर आप किसी चीप स्टिचिंग वाली शलवार कमीज पहनते हैं तो क्या होगा? उसका भी कॉलर, उसका बैंड है, उसके कफ हैं, दे विल ऑल लाइक worn out, दिस एंड दैट, बबल्स होंगे, बक्कल हो जाएगा. यू नो, obviously you're not going to look that great, you're not going to look that professional. फिर आप कलर जो चूज करते हैं, पूरी हमारी साइंस आज हमने कलर से वो बात की. आपने कोई शोक कलर ले लिया है, आपने कोई ग्रीन कलर ले लिया, आपने कोई मेहंदी कलर ले लिया, आपने कोई रस्ट कलर ले लिया, आपने ब्राउन की शेड पहन ली है, दे आर नॉट प्रोफेशनल कलर्स, सो यू किल दैट विद दैट. उसके बाद आगे इसकी फैब्रिक कौन सा पहनना है. अब लाजमी बात है, अगर आपने पॉलिएस्टर फैब्रिक पहना हुआ है, आपने वॉशिंग वेयर पहना हुआ है, believe it or not, I'm going to give you that professional look. Washing wear is wash and wear. I mean, people buy this because it's easy, you know, but you know, life is not easy. तो आप अगर 100% कॉटन में आते हैं तो दैट वुड बी बेटर फैब्रिक. फिर उसकी स्टिचिंग कैसे होनी है, उसकी स्टाइलिंग कैसे होनी है, फिर आपने कौन सी शूट के साथ पहनना है, फिर आपने उसको ड्रेसअप कैसे करना है. जैसे आपने कहा तो उसमें आप वेस्ट कोट के साथ ड्रेसअप करें, आप स्पोर्ट जैकेट के साथ ड्रेसअप करें. आप अगर अकेली शलवार कमीज पहन के जाते हैं, लेट मी टेल यू दिस, यू आर नॉट गोना मेक एनी इंपैक्ट एनी प्लेस. मैं प्रूव करके दे देता हूँ. आप 10 बंदे बिठा दें, एक बस का कंडक्टर है, एक बस का ड्राइवर है, एक छोटा दुकानदार है, छोटा बिजनेसमैन है. I mean, I'm not demeaning them or anything. You know, they are providing very good services to us. But anyway, he's wearing shalwar kameez, the other guy is wearing shalwar kameez. उसमें फिर एक मिड मैनेजमेंट का बंदा आता है, वो भी सलवार कमीज पहने हुआ है. उसके बाद सी लेवल का बंदा आता है, वो भी सलवार, सेम टाइप ऑफ थिंग. हाउ वुड यू डिफरेंशिएट who's who? So you know, I would say कि सलवार कमीज को वही अटेंशन दे जो आप सूट को देते हैं, टू पीस सूट. फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी फिटिंग. I mean, I tell you, horrendous mistakes are made in fitting. बाजू में बहुत खुले हैं, यहाँ तक लटक रही हैं, कफ नीचे तक आ रहा है, उसकी लेंथ बहुत लंबी है, बहुत छोटी है, सलवार बहुत चौड़ी है, बहुत लंबी है. I mean, all these issues, my friend. तो उसको ये ना सोचे कि ये स्लीपिंग सूट है. इसे अगर आप इसे कौमी लिबास की तरह पहने तो कायदे की तरह पहने. Anybody else? ये किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. अगर नहीं तो we can call it a day.
So I want to thank you very much. You are a very best of the best cream of the nation, and I really enjoyed talking to you. I wish we were physically, we were in person, so maybe one day we will. So thank you very much for attending. थैंक यू अमित साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का। वैसे टाइमिंग तो 2 घंटे थी इसकी, मगर 3 घंटे हो गए, 6:05 तक खत्म होना 3 था। घंटे हो गए, मुझे realize नहीं। और And can you imagine if I had my presentation, so this will go probably, तभी वो statement को मैं 8 घंटे का सेशन करता हूँ, 8 घंटे, you're not gonna believe it. जी, तो There's so काफी much इंटरेस्टिंग रहा। तभी सारे जो भी पार्टिसिपेंट थे वो आखिर तक हमारे साथ थे। तो मैं पार्टिसिपेंट्स का भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अगर आज के सेशन के बारे में आप लोगों का कोई फीडबैक है या फिर केबीसी के लिए कोई सजेशंस है कि फ्यूचर में हम कौन से और वेबिनार करवाएं, तो उनके लिए भी आप लोपा की जो ऑफिशियल ईमेल है या फेसबुक पेज है वहाँ पे हमें बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। My pleasure. Thank you.